नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। महाराष्ट्र सरकार के सिर पर तलवार लटक रही है। कुछ ही देर में स्पीकर का फैसला आ जाएगा और फिर ये तय हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब स्पीकर को फैसला देना है अपना आज, और कुछ ही मिनटों बाद फैसला आ जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति का सारा सीन बदल सकता है आज इस फैसले पे। हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक और बड़ी खबर आई है। कांग्रेस ने कह दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इन दोनों नेताओं ने कह दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम है। बात ठीक है, इतने बड़े आयोजन को जिस तरह विश्व हिंदू परिषद ने कंट्रोवर्शियल बना दिया, वहां के सर्वे सर्वा चंपत राय ने जो बयान दिए, आज शाम को 6 बजे हम इस पे चर्चा करेंगे अलग से कि चंपत राय ने आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए कि जिसके कारण इतना प्रतिष्ठित समारोह विवादों में घिर गया। इस पे हम चर्चा करेंगे शाम को 6 बजे। लेकिन अभी अभी की खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी भी नहीं जाएंगे। ये अभी तक की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने कह दिया है कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, इसलिए वो इस इवेंट में नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर थी। और महाराष्ट्र की राजनीति आज पूरा उफान पर है। महाराष्ट्र में सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर स्पीकर कौन सा फैसला देंगे, क्या फैसला देंगे और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। थोड़ी देर में ये फैसला आने वाला है। मैं सीधा आपको महाराष्ट्र लेके चलता हूं। महाराष्ट्र के उस पत्रकार से मिलवाता हूं जो सालों तक एबीपी चैनल का चेहरा रहे। महाराष्ट्र की कई बड़ी ब्रेकिंग खबरें उन्होंने दी हैं, दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हों, बम विस्फोट से जुड़ी हों, हर चीज में एक शख्स आ गया था जिसने कई किताबें लिखी हैं। ऐसे 4 PM के स्थानीय संपादक हैं महाराष्ट्र के जितेंद्र दीक्षित, वो मेरे साथ जोड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपका चेहरा भी महाराष्ट्र की राजनीति की तरह थोड़ा तनाव में लग रहा है, क्योंकि जैसा फैसला की उम्मीद है, महाराष्ट्र के लोग थोड़े तनाव में हैं। कुछ ही मिनटों में आएगा ये फैसला जितेंद्र जी, और ये माना जा रहा है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति पूरी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। क्या क्या सीन है? आज सुबह से आप सुबह गए थे, आज मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भी गए थे आप, आपने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी बड़ी हलचल थी। क्या नजारे क्या हैं आज महाराष्ट्र में? देखिए, दोनों तरफ जो है इस वक्त तनाव है, और शायद आप मेरे चेहरे के तनाव को उसी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन मेरी कोई कुर्सी नहीं जाने वाली है। कुर्सी जाने का डर इस वक्त एकनाथ शिंदे को है, और अगले चंद मिनटों में ही, मुझे लगता है कि घंटे भर में ही पता चल जाएगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं या फिर उनको कुर्सी छोड़नी पड़ती है और उनकी जगह पर अजीत पवार का नंबर लगता है, या फिर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बना देती है। तो बड़ा ही रोमांचकारी रहने वाला है ये पूरा घंटा। और अब से कुछ देर में हम उम्मीद कर रहे हैं संजय भाई की स्पीकर राहुल नार्वेकर वो अपना आदेश पढ़ना शुरू करेंगे। कुल जो आदेश उन्होंने तैयार किया है वो 500 से ऊपर पन्नों का है, तो उसे तो पूरा पढ़ने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन आज ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़कर सुना देंगे, और उससे ये बात पता चलेगी कि एकनाथ शिंदे समेत जो कुल 16 विधायक हैं शिंदे गुट के, वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे या फिर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ भी शिंदे गुट ने कर रखी थी, तो उन पर भी फैसला आने वाला है कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या वो विधायक रह सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर अब से कुछ देर में ही फैसला होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले से ही उद्धव ठाकरे गुट की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी फैसला आएगा उसके बायस्ड होने की काफी उम्मीद है, काफी आशंका है, और पक्षपात किया जा सकता है स्पीकर की ओर से। और इसके पीछे उन्होंने 2-3 कारण बताए। एक तो उन्होंने कहा कि जब पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप रीजनेबल टाइम के भीतर फैसला सुना दीजिए, फिर भी ढुलमुल तरीके से स्पीकर मामले को आगे बढ़ा रहे थे, तारीख पर तारीख दे रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। और दूसरी बात यह कि फैसला सुनाए जाने के ठीक पहले 2 बार एकनाथ शिंदे और स्पीकर के बीच में गुप्त मुलाकात होती है। तो उद्धव ठाकरे गुट की यह शिकायत है कि इस वक्त
स्पीकर जो है एक न्यायाधीश की भूमिका में है और एकनाथ शिंदे एक आरोपी की भूमिका में है। तो ऐसे में फैसला सुनाए जाने के पहले एक जज एक आरोपी से जाकर क्यों मिल रहा है, ये कितना नैतिक है, कितना जायज है। और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने एक एफिडेविट भी डाल दिया है पहले से ही, ये कहते हुए कि हमें ऐसा अंदेशा है कि जो आदेश आएगा वो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत का प्रभाव उसके ऊपर नजर आने वाला है। संजय भाई। अच्छा जितेंद्र जी, बताइए, आपने मुझे बताया कि एकनाथ शिंदे के घर और दफ्तर उनकी बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त बहुत बड़ा पुलिस बल तैनात कर दिया गया, तो शिंदे को इस फैसले से क्या खतरा हो सकता है? ये सिक्योरिटी अचानक क्यों बढ़ाई गई है इतनी? देखिए, शिवसेना का ये तेवर रहा है कि शिवसेना जब भी प्रतिक्रिया देती है तो अक्सर उसमें हिंसा का इस्तेमाल हो जाता है। और हमने बीते 30-40 सालों में कई बार देखा कि कई ऐसे मौके होते हैं जब शिवसेना को अगर कोई बात पसंद नहीं आती है या कुछ शिवसेना के खिलाफ होता है तो जो शिव सैनिक है वो सड़कों पर उतर आते हैं, पथराव करते हैं, हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं और अपने ओपोनेंट की पिटाई भी करते हैं, उन पर हमले भी करते हैं। तो अब चूंकि भले ही शिवसेना दो फाड़ हो गई हो, लेकिन कार्यकर्ता तो वही है जो कि अविभाजित शिवसेना में अब से 1.5-2 साल पहले तक एक साथ में ही थे। तो पार्टी के दोनों ही पार्टियों का चरित्र जो है वो एक ही जैसा है। तो ऐसे में ये अंदेशा पुलिस की ओर से लगाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए ठाकरे गुट के खिलाफ फैसला आता है तो ऐसे में ठाकरे गुट के जो शिवसैनिक है वो कहीं शिंदे गुट के दफ्तर पर हमला ना कर दें, उनके लोगों के ऊपर हमला ना कर दें, हिंसा ना शुरू हो जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति ना निर्मित हो जाए। और इसलिए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है एहतियातन की जा रही है इनकी ओर से। संजय भाई। अरे जितेंद्र जी, बताइए कि इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी को तो ये पटकथा पता ही होगी। ये तो हम कितना ही कह दें कि स्पीकर निष्पक्ष होता है, न्यायाधीश की भूमिका में होता है, लेकिन ये फैसला जो लिखा है स्पीकर ने, ये बच्चा बच्चा जानता है कि फैसला एक्चुअल में कहाँ लिखा गया होगा। साहेब का और छोटे साहेब का इसमें क्या योगदान होगा, साहेब और छोटे साहेब ने क्या भूमिका अदा की होगी, वो आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के वो चंद पत्रकार हैं जो इतना ज्यादा जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या गेम प्लान तैयार किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य है। तो क्या लग रहा है बीजेपी का क्या गेम प्लान हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, कहने को सही है, संवैधानिक पद है, स्पीकर अपने मन से कहेंगे लिखेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो हर स्पीकर, हमने हर राज्य के स्पीकर का हाल देखा है कि वो सत्ता की एक तरह से सत्ता का ही रहता है। तो क्या लगता है बीजेपी का क्या गेम प्लान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया है, मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर। पहली बात कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, इनको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से अपना फैसला सुनाया जाना चाहिए। लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा बीते 3-4 सालों में कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो है वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप जो है काम नहीं कर रहे हैं। एक ताजा एग्जाम्पल था जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, तो उनकी ओर से कई ऐसे फैसले लिए गए, कई ऐसे कदम उठाए गए जिन पर कि सवाल खड़े होते हैं। भले ही वो एक संवैधानिक पद पर थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके भीतर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता का जो चरित्र था वो बाहर नहीं, वो निकल नहीं रहा था उस पद पर बैठने के बावजूद, क्योंकि राज्यपाल बनने के कुछ महीने पहले तक वो बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी शासित एक राज्य में वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और ऐसे में जब महाराष्ट्र में बीजेपी विपक्ष में गई और ये गवर्नर थे तो इनके कई ऐसे फैसले हुए जिनको देखकर ये लग रहा था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे थे। और जो स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, उनका भी अगर बर्ताव आप देखेंगे, जब से वो स्पीकर बने हैं तब से इसी तरह का उनका रवैया रहा है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इनको फटकार लगानी पड़ी, तब जाके इन्होंने इस मामले की सुनवाई में तेजी लाई और अब जाकर जो है 10 जनवरी की तारीख को ये अपना फैसला सुना रहे हैं। अगर इनकी अपनी चलती, अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तब तो ये फरवरी मार्च तक ये मामले को आगे ले जाते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया तो उसके बाद में स्पीकर महोदय, जो कि बीजेपी से आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मामले में रफ्तार लाई और अब फैसला सुना रहे हैं। अब आते हैं बीजेपी के गेम प्लान के ऊपर कि अब बीजेपी आगे क्या कर सकती है। पहली बात, देवेंद्र फडणवीस ने अब से कुछ हफ्ते पहले यह बयान दिया था कि देखिए, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना है, असली नाम भी दे दिया है, आधिकारिक नाम भी दे दिया और साथ में चुनाव चिन्ह भी दे दिया है, नंबर 1।
तो उनका यह कहना है कि इस आधार पर मुझे लगता है कि स्पीकर भी ऐसा ही फैसला लेंगे और एकनाथ शिंदे की कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहेगी, उनकी विधानसभा की सदस्यता सुरक्षित रहेगी। लेकिन उन्होंने फिर आगे की बात कही कि अगर मान लीजिए कि उनको विधानसभा से अयोग्य घोषित कर भी दिया जाता है, तो फिर बीजेपी के पास प्लान बी है। प्लान बी क्या है? प्लान बी यह है कि उनको फिर विधान परिषद का सदस्य बना दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यहां की विधायिका में 2 सदन है, निचला सदन है विधानसभा, ऊपरी सदन है विधान परिषद का। तो अगर वो विधानसभा से निकाल दिए जाते हैं तो उनको बीजेपी विधान परिषद का सदस्य बना सकती है और वे मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रह सकते हैं। उद्धव ठाकरे भी जब मुख्यमंत्री थे तो विधान परिषद के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होने का फायदा एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। तो ये प्लान बी है। प्लान सी क्या हो सकता है? प्लान सी ये हो सकता है कि एक अजीत पवार को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि अजीत पवार भी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं और मुझे लगता है कि मन ही मन वो सोच रहे होंगे कि एकनाथ शिंदे को तो अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, इनकी कुर्सी चली जाए तो अपना नंबर लग सकता है। क्योंकि बीजेपी जैसे एकनाथ शिंदे के मामले में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से मेरे मामले में भी ये कर सकती है। भले ही मेरी पार्टी बीजेपी से छोटी है इस महायुति में, लेकिन अगर शिंदे को बना सकती है तो मुझे क्यों नहीं बना सकती? तो एकनाथ शिंदे की जगह पर अजीत पवार को भी बनाया जा सकता है और उनके लोग तो बीते चंद महीनों से ऐसा प्रचारित भी कर रहे हैं कि एक बार स्पीकर का फैसला आएगा तो शिंदे आउट, पवार इन। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, प्लान डी भी है। प्लान डी क्या है? प्लान डी यह है कि फिर बीजेपी अपने ही किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दे। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये भी एक संभावना है। लेकिन इसके अलावा क्या है? प्लान डी के बाद प्लान ई क्या हो सकता है? प्लान ई ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा को भंग कर दिया जाए और उसके बाद मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिए जाएं और लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाए। तो मैंने आपको प्लान ए, बी, सी, डी और ई ये बता दिया कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। संजय भाई, मुझे तो लगता है जितेंद्र जी, ये जो ई वाला जो आपने सबसे आखिर में बताया, ये प्लान भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इन बार बार हमने वोट एक मुख्यमंत्री को चुन के दिया और कई मुख्यमंत्री हमें तोहफे में बदल बदल के मिल जा रहे हैं, हाँ के लोग कहते हैं। तो ये प्लान ई है कि विधानसभा भंग कर दी जाए और लोकसभा के साथ साथ चुनाव करा दिया जाए। इसलिए फायदेमंद है कि मोदी जी को लगता है कि उनके नाम पर वोट मिल जाते हैं, और अगर इसके अलावा मोदी जी महाराष्ट्र में वोट लेने जाएंगे तो शायद महाराष्ट्र मिजोरम के बाद दूसरा राज्य हो जाएगा जहां पे मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं कि सारी बड़े उद्योग उठा के गुजरात भेज दिए गए। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा रेवेन्यू को नुकसान किया। गुजरात को चमकाने के चक्कर में महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है। और जब गठन हुआ था महाराष्ट्र का, तब भी आपको याद होगा उस समय में कितनी हिंसा हुई थी, कितने लोगों की मौत हुई थी। तब से महाराष्ट्र और गुजरात में एक सहज संबंध नहीं बताए जाते हैं, और हम महाराष्ट्र के सारा माल पानी उठा के गुजरात भेज दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों में नाराजगी है। तो अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है कि तब ज्यादा नुकसान होगा। साथ साथ हो जाएंगे तो शायद लहर में हो जाएगा। बीजेपी ये भी सोच सकती है ना। बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट मैंने कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो भी 4 PM के लिए बनाया था और उसमें मैंने इस बात को बड़े ही विस्तार से समझाया था। बीजेपी में इस वक्त 2 धड़े हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में 2 धड़े इस वक्त हैं। एक धड़े का मानना है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करा दिए जाने चाहिए, और इसके पीछे उनका तर्क यह है कि अभी राम मंदिर को लेकर जो मोमेंटम बन रहा है उसका फायदा फिर मिल सकता है और फिर से एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी आ सकती है, क्योंकि जो हालिया सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अगर ये जो राम मंदिर को लेकर मोमेंटम पूरा बन रहा है, अभी 22 जनवरी को जब इवेंट होगा और उसके बाद कई हफ्तों तक ये जो चलने वाला है, तो एक साथ जो है उसी में बहती गंगा में महाराष्ट्र में भी हाथ धोया जा सकता है, ऐसा बीजेपी के एक धड़े का मानना है। लेकिन दूसरे धड़े का मानना है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी सरकार के पास में 7-8 महीने का वक्त तो बचा हुआ है, तो उन 7-8 महीनों का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है अक्टूबर में जब चुनाव होने हैं तो अक्टूबर में चुनाव करा देना चाहिए। फिलहाल सबका फोकस जो है लोकसभा चुनाव पर ही हो। पहला फोकस ये होना चाहिए कि मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री बनाना है, तो बाकी चीजों में डिविएट ना होके, डिस्ट्रैक्ट ना होके टोटल फोकस जो है लोकसभा में हो। तो एक धड़े की ये भी सोच है। तो ये दोनों अलग अलग धड़े हैं। जहां तक देवेंद्र फडणवीस के बयान का सवाल है, उन्होंने इस मामले में बयान भी दिया था। उनका कहना है कि
पहले विधानसभा चुनाव कराने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी चलती है। भले ही वो दिखने में महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता हों, लेकिन हमने देखा कि कैसे उनका डिमोशन कर दिया गया। जो आदमी 2 बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा, उसको ऐसे वक्त में डिमोट किया गया जब उसकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की शिवसेना में, और जब बहुमत हासिल हो गया और मुख्यमंत्री जब फिर से एक बार बन सकते थे देवेंद्र फडणवीस, इसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी बात, उनको पता भी नहीं था शपथ विधि के 2 घंटे पहले तक कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है। ये अमित शाह और मोदी ने फैसला ले लिया था। तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, अब महाराष्ट्र की राजनीति में उनका इतना, उनके कहने का, बोलने का इतने मायने नहीं लगते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो ऊपर के 2 बंधु ही डिसाइड कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी। तो वो जो फैसला लेंगे देवेंद्र फडणवीस को मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो जो फैसला लेंगे वो मानना पड़ेगा, बात तो सही है। बीच में एकनाथ शिंदे का एक बयान है, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। और इसी के बलबूते पर, मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए, और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं, और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बेचैन हो गए हैं। और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। जो सर संजय राउत कह रहे हैं जो अरे वो छोड़ो उसको, उसके लिए मेरे पास दूसरे लोग हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू तो इसमें एक ही बात कहूंगा मैं, ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुपकर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए, और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते। ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं, वो घटना बाह्य लोग वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था उनके ऑर्डर में, जजमेंट में, कि जब पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद, जब हमारे पास मेजॉरिटी थी 104 बीजेपी के, 50 हमारे, मतलब 164 अगेंस्ट 99, मतलब मेजॉरिटी वाला कौन है? मेजॉरिटी वाले हम हैं। और इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का निर्णय जस्टिफाइड किया है। ये जरा उनको पढ़ना चाहिए। प्यारा 204 पढ़े। एकनाथ शिंदे थे जो बता रहे थे, ज्ञान बता रहे थे कि उनको पढ़ना चाहिए। बीच में अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, कई जगह बहुत बड़े बड़े संस्थानों में रहे हैं, कई ग्रुप एडिटर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। संजय राउत का एक बयान और आ गया, वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। गैम्बलिंग
जुगाड़ और जुगाड़ शुरू हुआ है तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। मैं इसलिए कहता हूँ, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया है कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है, इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं। वो हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति, न्यायालय, ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है, तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूं? ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर हमने ले ली है, रिकॉर्ड पर लाया है हमने। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं। रोड शो वगैरह नासिक में है। उसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है, अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है। इसलिए वो आत्मविश्वास है कि मैं आ रहा हूँ और सरकार रहेगी, निर्णय मुझे मालूम है। दूसरी बात, आज फैसला है गैरकानूनी सरकार का, और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो दावोस में जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार, हम मानते हैं कि गैरकानूनी ठहर सकती है, असंवैधानिक करार दी सकती है, तो आप में इतना आत्मविश्वास कहाँ आया कि फैसला कुछ भी हो, मैं बतौर राज्य का मुख्यमंत्री दावोस एक डेलीगेशन के साथ जा रहा हूँ। उसका मतलब आपको भी मैच फिक्सिंग के बारे में पूरी जानकारी है और आपको निर्णय पहले से मालूम है। ये सभी बातें, ये दोनों बातें, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आने की बात और मुख्यमंत्री दावोस जाने वाली बात, हम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। आज का जो निर्णय होने वाला है, बात तो सही है कि फैसले से देने से पहले स्पीकर को नहीं जाना चाहिए। और जितेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि एक तरह का संवैधानिक न्यायाधीश की भूमिका होती है। अजय शुक्ला जी, इतना इंपॉर्टेंट फैसला आ रहा है, स्पीकर पहले मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं ये तो मैच फिक्सिंग है। क्या फैसला पढ़वाने गए थे उनको? क्या मानना है आपका अजय जी? स्वाभाविक सी बात है, जब कंगारू कोर्ट चल रही हो तो इसी तरीके के जजमेंट की आप उम्मीद करें। इससे ज्यादा और बहुत बड़ी उम्मीद मुझे लगता है बेमानी होगी, क्योंकि यदि न्याय करना होता तो इतना समय से, जब से चर्चा चल रही है, सारी चीजें आई, पिटीशन आई, उसके बाद से बड़ा पर्याप्त टाइम था, सुनवाई का भी टाइम था। ये इतनी बार फटकार लगने के बाद में ये जजमेंट करने की स्थिति में आए, और जब आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? तो वो तो होना ही नहीं था। तो कमोबेश वही स्थितियां हैं, और इसलिए मैं तो मान के चल रहा हूं कि जो आने वाला है फैसला, वो फैसला यही आने वाला है जो शिंदे चाहते हैं। और शिंदे तो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी के उनके एमएलए जो हैं या वो कोई भी अवैध घोषित हो या जिस भी तरीके से उनका विघटन घोषित हो, तो इसलिए है। और चुनाव आयोग भी कमोबेश उन्हीं के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग की हम भूमिका लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, वो एक संवैधानिक संस्था की बजाय एक भारत सरकार का विभाग अधिक बन गया है। और ऐसी स्थिति में उम्मीद नहीं कर सकते।
और कमोवेश यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट की हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी जिस शक्ति के साथ में जिस तरह से उसको डिसाइड करना चाहिए था वैसे नहीं किया गया। बार बार उसने टाइम भी दिया और बार बार उनकी बात को सुना गया। तो इससे है कि यदि पीड़ित पक्ष को आप सुनते नहीं है तो वो भी एक स्थिति आती है। तो जो स्थितियां हैं इन सबको लेकर के बड़ा साफ है कि यह एक डर का माहौल है और उस डर के माहौल में फैसला वही आएगा जो चाहते हैं साहब। जी सुनिए। बिल्कुल ठीक बात है। जितेंद्र जी, बहुत तीखा हमला किया है संजय राउत ने। कहा है कि बात सही है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ऐसे जाते नहीं है। अगर जरा सा भी उनको लगता कि सरकार जा रही है तो नेचुरली फजीयत होती है उनकी और उस स्थिति में वो आते नहीं। लेकिन अगर उनका आना ये संकेत है कि वो पता है उनको कि जीत हो रही है, सरकार बच रही है। क्या लगता है जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री का जाना दावोस में, प्रधानमंत्री का आना जो संजय राउत कह रहे हैं, ये इशारा कर रहा है कि सरकार तो बच जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये यही संदेह उत्पन्न कर रहा है और जो मैच फिक्सिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये उस थियरी को जो है और ज्यादा मजबूत कर रहा है कि वाकई में पहले से ही इन लोगों को पता है कि आदेश क्या आने वाला है और इसीलिए वो सर्कमस्टेंसेस का हवाला दे रहे हैं। एक तो कि पहले जिस तरह से 2 बार मीटिंग होती है मुख्यमंत्री के बीच में और स्पीकर के बीच में, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये कि मोदी परसों के दिन आ रहे हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में आने के बाद वो कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। एक नासिक में पार्टी की उनकी रैली है। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रांस हार्बर लिंक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो अटल सेतु जिसको नाम दिया गया है, उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो वो भी है और भी बहुत सारे इवेंट है। तो अगर महाराष्ट्र में पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाता, यहां पर अगर राजनीतिक उठापटक होती, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री यहां पर आते? तो ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि वो आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम तय है, तो जाहिर तौर पर उनको इस बात की जानकारी भी दे दी गई होगी कि आखिर फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्पीकर महोदय हैं वो उन्हीं की अपनी पार्टी के हैं। तो जाहिर तौर पर उनको कन्वे कर दिया गया होगा कि भाई मैं ये फैसला सुनाने वाला हूं, या इस तरह का फैसला सुनाने का निर्देश स्पीकर को दिया गया होगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे वक्त में जहां पर हम लोग सोच रहे हैं कि शायद एकनाथ शिंदे की कुर्सी जो है वो खतरे में है, उनकी कुर्सी जा सकती है। एकनाथ शिंदे ने डावोस जाने का प्लान बना लिया है, वो डावोस जा रहे हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि इस आशंका को बल देता है कि एकनाथ शिंदे को भी पता है कि आखिर में फैसला क्या आने वाला है। और बॉटम लाइन ये है कि ये लोग जानते हैं कि जो फैसला आएगा वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा और उनकी कुर्सी बच सकती है। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सकते हैं। संजय भाई। अच्छा जी, ये कहाँ चली गई वो नैतिकता की बातें, वो नियम कायदे कानून, वो स्पीकर की मर्यादा? कहा जाता है कि स्पीकर जो है हाउस का वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, सबसे ज्यादा ताकत होती है, मर्यादा होती है। अब राजनीति में अजय जी क्या नैतिकता की, मर्यादा की सारी सीमा रेखाएं खत्म कर दी है? बीजेपी कहां तक ले जाएगी इस देश की राजनीति को? संजय जी, इसका उदाहरण यहीं से नहीं है। आप एक देखिए, मुझे आज भी याद आता है कल्याण सिंह सरकार बचाने के लिए केसीनाथ त्रिपाठी ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से खेल किया था, क्या वो संवैधानिक पद और विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा के अनुसार था? शायद नहीं था, लेकिन उन्होंने किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज के समय से नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से। अटल जी के समय में भी सरकार बनाने, सरकार में बैकडोर एंट्री, सरकार में बने रहने के लिए किस किस तरीके के खेल हुए हैं। 1977 देख लीजिए, जनसंघ का अपना विलय कर देते हैं जनता पार्टी में, और उसके बाद आइए फिर जैसे उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होते और जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है और अंततः अलग भारतीय जनता पार्टी एक बन जाती है। उसके बाद आप देखिए फिर आकर के जनता दल जब बनता है तो जनता दल में किस तरीके से 85 सांसदों के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन दे देते हैं और कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतने बड़े अत्याचार उस शासन में होते हैं और भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं।
जब राजीव गांधी जा करके पीएमओ के सामने धरने पर बैठ जाते हैं तब कहीं, और तमाम सारे प्रदर्शन होते हैं कांग्रेस के तब कहीं सेना भेजी जाती, वह स्थिति होती, कश्मीरी पंडित वहां से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, सरकार बनाने के लिए 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब पता था आपके पास नहीं है, आपके पास में जिस तरह की स्थिति है, क्यों आप बने थे कि साहब पूर्व प्रधानमंत्री का तमगा लग जाए और हमारे लिए एक अच्छा आधार बन जाए। चलिए, उसके बाद आप बने, और बनने के बाद में क्या क्या नहीं हुआ। तब अंबानीज को किस तरीके से पोसा गया और किस तरीके से बढ़ाया गया। आज यदि नरेंद्र मोदी पर अदानी को लेकर आरोप लगते हैं, तो तब अंबानीज को किसने बढ़ाया था? इसी भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया, जिस तरीके से उनके लिए सब कुछ किया, वो किसी से छिपा है क्या? सारे भ्रष्टाचार हुए थे। उसके बाद आइए आप, जब सरकार बनाने की बात आती है, सब कुछ आता है, फिर 2014 के चुनाव, 2004 के चुनाव के वक्त में जिस तरीके से खेल किया गया, जिस तरीके से पूंजी का इस्तेमाल किया गया, सारी चीजें किसी से छिपी हैं क्या? और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद तो सब कुछ खुल के बिल्कुल नंगे रूप में आ गया सामने, निर्वस्त हो गया पूरा कि क्या होता है संवैधानिक संस्थाओं के पद की, और खुद प्रधानमंत्री का पद जो होता है कितनी गरिमामयी पद होता था, उस पद की कोई गरिमा रह गई है क्या? गली मोहल्ले का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, पहुंच जाएंगे। उद्घाटन करना हो किसी भी विभाग का, शिक्षा का हो, रेल का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, हवाई जहाज का हो, किसी चीज का हो, सब नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, और कोई रह ही नहीं गया। हमने तो अभी कभी ऐसे नहीं देखा था। मुझे आज भी याद है कि एक बार एक नई शताब्दी चली थी और उसका उद्घाटन का था, तो जो यहाँ का स्थानीय सांसद था उसने उसका उद्घाटन किया था, मंत्री की छोड़ दीजिए आप। तो यह होता था। और आज स्थिति क्या है? कुछ भी आप होगा तो साहब नरेंद्र मोदी, बस अपना चेहरा दिखना चाहिए, कहने को कि हम छुट्टी नहीं लेते हैं, अवैध तौर पे सरकारी खर्चे से, सरकारी उससे छुट्टियां एंजॉय की जा रही हैं, जिस तरीके से की जा रही है वो सबको ही देख रहा है। और उसके बाद में कहा जाता है साहब ये कर रहे हैं। तो जो भी कुछ आप देखिए, जहां भी देखिए, आपको एक और बताऊं, एक अटल टनल बनी है, और वो अटल टनल का जो नींव पत्थर रखा था वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रखा था मनमोहन सिंह ने। आप ये समझिए, वो अटल टनल इन्होंने नाम दे दिया और मनमोहन सिंह का पत्थर गायब कर दिया। ये तो कहिए, जब सरकार यहां आ गई कांग्रेस की, तो उसने वो पत्थर ढूंढ के ढुड़वाया और फिर से दोबारा उसको उस जगह लगवाया। लेकिन ये स्थिति है, इनसे कोई उम्मीद आप मत करिए ये। और आप लोकसभा में नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से ओम बिरला, क्या आपको लगते हैं कि वो स्पीकर है? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से अधिक की स्थिति नहीं है, उपराष्ट्रपति की स्थिति कमोबेश यही है। तो आप उनका जिस तरह की वो बातें करते हैं, गुणगान करते हैं, क्या लगता है वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं? तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? इसी तरीके की बहुत सारी स्थितियां, कोई किसी को महापुरुष बताता है, कोई किसी को युग पुरुष बताता है, तो यही खेल तो चल रहे हैं। और इस युग पुरुष के और महापुरुष बताए जाने के इस खेल के दौरान साहब एक चीज जान लीजिए, आप एक अदने से विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई ऐतिहासिक फैसला देगा, कोई न्याय का फैसला देगा, तो भूल जाइए संजय जी, उस फैसले का इंतजार मत कीजिए जी। लेकिन अजय जी, अगर आपने जैसी सब चीजें बताई, इन हालातों से देश का लोकतंत्र तो कमजोर होता है ना, कहीं ना कहीं उस पर डेंट पड़ता है, लोकतंत्र की हत्या होती है अगर ये सब आचरण रहता है। स्पीकर अगर ऐसे मैनेज होंगे तो लोकतंत्र खत्म होगा। स्वाभाविक सी बात है, ये लोकतंत्र के लिए इससे कलंकित स्थिति और क्या हो सकती है। आप एक चीज समझिए, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए समग्र प्रयास होंगे। आप बताइए, मुझे कहीं दिख रहे हैं प्रयास? आप हालात देखिए, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जब कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तब भी विपक्षी दल के नेताओं को तमाम अपनी रैलियां करने, अपने कार्यक्रम करने की छूट होती थी। आज आप देखिए, राहुल गांधी की शांतिपूर्ण मणिपुर से रैली वो शुरू होनी है, भारत न्याय यात्रा, उसकी अनुमति रद्द कर दी जाती है।
तो आप इससे समझिए कि इस हद तक जब गिर गए हो तो काहे का लोकतंत्र, काहे का संवैधानिक मर्यादाएं, सब तो खत्म कर दिया है। और इसमें निश्चित रूप से संजय जी एक बड़ा योगदान हमारे मीडिया इंडस्ट्री का है। मीडिया ने जिस तरीके से जाकर के चारण करना शुरू कर दिया, उस चारण के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। मैं भी 14 चैनलों का चीफ एडिटर रहा हूं, मुझे पता है कि उन सारे हालात के बावजूद कैसे कैसे होता था। हम लोग से रिक्वेस्ट करती थी सरकार कि हाँ साहब ये हमारा भी एक ये करवा दीजिए, और आज स्थिति है आदेश वहीं से आता है कि कौन सी डिबेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या प्रोग्राम बनेंगे, एजेंडे पूरे पूरे आ जाते हैं दिन भर के। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कौन सा खेल हो रहा है और क्या किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी उम्मीद करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत होगा जी। अच्छा जी, आपने जिक्र किया मीडिया का, आप इतने बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे, 15 चैनलों के ग्रुप एडिटर रहे, मीडिया भी इतना क्यों गिर गई महाराष्ट्र में मामले में? मान लीजिए स्पीकर अगर कोई फैसला ऐसा देते हैं, कोई सवाल पूछने की हिम्मत करेगा मीडिया में? क्यों मीडिया का पतन ऐसा हो गया कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती? संजय जी, इसकी दो वजह है। एक तो मीडिया के मालिकान जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पालने लग गए, नंबर एक। नंबर दो, सारे मीडिया घराने, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, कोई एक ऐसा अछूता नहीं है जहां पर अपने काले कारनामे ना हो। कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। तो वो स्थिति है, तो डर लगता है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और दूसरे एजेंसीज का। तो एक तो ये है, साथ में जो मीडिया इंडस्ट्री चला रहे हैं तमाम मालिकान, उनके अपने तमाम सारे धंधे हैं, और वो जो धंधे हैं जो मीडिया के अतिरिक्त हैं, उन धंधों में भी बहुत बड़े बड़े खेल हैं। तो उन सब खेल का भी डर है। और इसके बाद में सरकार के साथ रहने से ये पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से उन पूंजीपतियों को भी डायरेक्शन जाता है जो विज्ञापन दाता है कि साहब किसको आपको विज्ञापन देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि यदि आप सरकार के फेवर में है तो आपको विज्ञापन मिलेंगे, आपको रामदेव भी देगा, आपको वो भी देंगे, तमाम सारे लोग देंगे, और नहीं होगा तो तमाम सारे लोग हाथ खींच लेंगे, डरेंगे। तो वो स्थिति भी है। फिर सरकार के विज्ञापन का, तो सरकार का भी विज्ञापन की वही स्थिति है। पहले विज्ञापन सरकार की तरफ से बहुत थोड़े होते थे, कुछ 100 करोड़ रुपए के पूरा सालाना बजट होता था। आज स्थिति है कई कई हजार करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है, सब कुछ। तो और ये सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय के बजट की बात मत कीजिए, इसके बाद में विभागों के भी बजट है। तो विभागों में भी अब हो गया है, यदि आप इसको देखें, 5 लाख करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी ने अपना विज्ञापन कराया है विभिन्न विभागों से मिला करके। यदि हिंदुस्तान में कहेंगे तो आपकी जो जीडीपी है उससे ज्यादा तो आप विज्ञापन पे खर्च कर देते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, तभी शायद 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया है, 12 टन सोना आपको बेचना पड़ रहा है, और ये सारे हालात हैं। तो इस तरह की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और इसके बाद भी देश भिखारी है, और साहब 81 जो है करोड़ लोग जो है भीख का 5 किलो अनाज ले रहे हैं। तो आप इससे समझिए बेरोजगारी की जो स्थिति है वो सामने है। तो ये हालात तो हैं ही। बिल्कुल ठीक बात है। जितेंद्र जी, ठाणे में आनंद आश्रम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कुछ ही पलों में फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष आपने जैसा बताया अपने चैम्बर में है। जितेंद्र जी, लेट क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है ये फैसला पहले 4 बजे आना था, फिर 4:30 और अब 5 बजे जा रहा है? क्या कारण है? नहीं, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देरी हो रही है। ये कहा ही गया था कि 4 बजे के बाद से फैसला आएगा, और दोनों ही पक्षों के नेताओं को हाजिर रहने के लिए कहा गया था फैसला सुनाए जाते वक्त। तो तमाम नेता पहुंच रहे थे, और अब चूंकि चले गए हैं चैम्बर में स्पीकर राहुल नार्वेकर, तो मुझे लगता है कि अब फैसला पढ़ना भी हो सकता है शुरू कर दिया होगा, या बस करने वाले होंगे। और सबसे पहले वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाने वाले हैं, और उसको भी सुनाने में मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का वक्त तो कम से कम लगने ही वाला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी क्षण वो फैसला आ सकता है।
बाकी पूरा फैसला जो है वो अपलोड किया जाएगा साइट पर, और उसमें वो रीजनिंग देंगे कि आखिर जो उन्होंने फैसला लिया है उसके पीछे तर्क क्या है, किन की दलीलों को उन्होंने माना है, जो इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो आदेश हुए हैं उनको अगर रेफरेंस में लाया है तो उन सारी बातों की जो है विवेचना होगी, उनको विस्तार से उनके बारे में लिखा जाएगा। चूंकि राहुल नार्वेकर खुद एक वकील भी रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम लॉ पॉइंट्स को लेकर, भले ही वो फैसला बाद में उसको चैलेंज किया जाए सही है या गलत है, लेकिन जो भी फैसला आएगा तो ये देखा जाएगा कि आखिर इसके पीछे उन्होंने रीजनिंग क्या दी है, कौन से ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर उन्होंने ये फैसला सुनाया है। दोनों ही पक्षों के बीच में जो चिरे हुई, करीब 2.25 लाख कागज तैयार हुए, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त दोनों ही गुटों के जब नेताओं को पेश किया गया था इनके सामने, तो उन सभी को पढ़ने के बाद में ये अब अपना फैसला सुना रहे हैं। तो ये बड़ा ही जानना दिलचस्प होगा। एक तो फैसला अपने आप में दिलचस्प होने वाला है, उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है जो कुछ ही मिनटों में मुझे लगता है कि हटने वाला है, और उसके बाद जो रीजनिंग वो देंगे कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों सुनाया, उसको भी पढ़ना बड़ा ही दिलचस्प होगा। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस फैसले को भी पढ़ना बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या लग रहा है आपको, इस फैसले के खिलाफ भी तुरंत संजय राउत वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? और क्या उम्मीद, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अगर ये फैसला उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ आता है, जैसा कि सभी आशंका जता रहे हैं, और खुद उद्धव ठाकरे गुट इस बात की आशंका जता रहा है कि फैसला उनके खिलाफ जा सकता है और शिंदे सरकार बच सकती है, शिंदे की विधानसभा की सदस्यता बच सकती है, तो पूरी तैयारी कर ली गई है। ठाकरे गुट की तरफ से वकीलों की टीम तैयार है कि इस मामले को अदालत में चुनौती दी जाए, इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाए। और उनकी ओर से पहले से ये संकेत भी दे दिए गए हैं कि जिस तरह से कल के दिन एफिडेविट फाइल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस बात को आधार बनाया गया कि जज आरोपी से मिल रहा है, स्पीकर एक जज की भूमिका में है, एक ट्राइब्यूनल की भूमिका में है, और एकनाथ शिंदे एक आरोपी की भूमिका में है, और फैसला सुनाए जाने से पहले गुपचुप जब जज आरोपी से मुलाकात करता है तो यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या इन दोनों के बीच में मिली भगत है, और क्या जो आदेश आएगा वो आदेश कहीं ना कहीं इस मिली भगत से प्रभावित हो गया। और इसी आशंका को जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया है, हलफनामा फाइल किया गया है ठाकरे गुट की ओर से, ताकि ये बात रिकॉर्ड पर रहे और आगे जब राहुल नार्वेकर अपना आदेश सुना देंगे और वो आदेश अगर ठाकरे गुट के खिलाफ है तो इस एफिडेविट में कही गई बात को भी कंसीडर किया जाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। संजय भाई बिल्कुल ठीक बात है अजय जी। ये तुरंत इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी ठाकरे की टीम, उद्धव ठाकरे की टीम। क्या लग रहा है कि अगर इस तरह का फैसला आता है जिसमें स्पीकर का मनमानी होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत? आप खुद एडवोकेट भी हैं, आप लॉ पढ़े हुए हैं, क्या लगता है अजय जी, कुछ राहत मिल पाएगी इनको सुप्रीम कोर्ट से? मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है इसमें वो कोई फायदा कुछ हो जाने वाला है या सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाने वाला है, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और उससे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बार बार पेश होते रहे, और जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी गारंटी ली थी कि हम इसका ये करेंगे, और उसके बाद वो महाराष्ट्र और उस वहां के तमाम नेताओं के साथ साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष से मिले, और जिस तरीके से उन्होंने किया, उससे सारी बातें प्रमाणित होती हैं कि वो सब फैसले पहले से ही लिखे हुए हैं। 1200 पेज का फैसला है करीब करीब, और 1200 पेज का फैसला वो कोई ये नहीं है कि बैठ के अभी वो लिखवा रहे हैं, वो 1200 पेज का फैसला लिखा लिखाया रखा हुआ है, वो तो बस उन्हें शो करना है कि हाँ साहब अनाउंस हो गया। तो ये स्थिति है। तो प्रोनाउंस होने के पहले का ये पूरा एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट तक वाकिफ है कि हाँ क्या आने वाला है। तो इसलिए सारी तैयारियां और सब कुछ वहां पर मौजूद है, और मुझे लगता है कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही इससे कोई राजनीतिक बदलाव आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी फैसला लेता है, कितना करता है, इससे आप समझ सकते हैं। आप याद करिए जब यह सारी घटनाएं हुई थी, तत्काल गई थी शिवसेना, और उस समय इन्होंने जब इंसाफ सुनाया
तो ये कहा कि नहीं, आप चूंकि इस्तीफा दे चुके थे इसलिए हम आपको वो नहीं कर सकते हैं। तो साहब उसके बाद भी तो आप कर सकते थे कि किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया था। आप यदि एज इट इज स्थिति बहाल करते तो इस्तीफा अपने आप खत्म हो जाता। तो वो स्थितियां हैं, फैसला तो बेसिकली जो है वही रहेगा, तो इसलिए उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने जा रहा है। जी संजय जी। अगर ये बदलाव नहीं आने जा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ बेकार हो जाएगी, तब तक 6-7 महीने नहीं में चुनाव आ जाएगा। जय जी। संजय जी, ये तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, ये तो सिर्फ वक्त को खींचना है और इसीलिए ये किया जा रहा है। आखिरी वक्त में यदि आप, जब टाइम खत्म हो जाए, आप कह दीजिए हाँ ये गलत था। आप देखिए तमाम सारी जो पिटीशंस होती हैं, चुनाव पिटीशंस, उनके फैसले आखिरी वक्त में आते हैं और उसका कोई नतीजा निकलता है क्या? जिस व्यक्ति ने अपना वो पद ग्रहण कर लिया, उसके तमाम लाभ ले लिए, तमाम तरह की चीजें हो गई, तो क्या वो वापस आता है क्या? तो यही तो खेल है और यही होता आ रहा है और यही अपने आप में दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह की स्थितियां हैं। यदि टाइम बाउंड हो, चीजें करी जाए तो इससे एक बेहतर स्थिति आए, विश्वास भी जागे। ये कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। जी संजय जी। जितेंद्र जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए और बात बिल्कुल सही है कि चुनाव की फैसला चुनाव के बारे में, अयोग्यता के बारे में तब करने का फायदा क्या है जब समय खत्म हो जाए सारा। 6-7 महीने तो टाइम ही बचा है। जी बिल्कुल, मैं अजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने अभी कहा कि ये वक्त खींचने की सारी कुछ वक्त खींचने का प्रयास चल रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरुआत से ही दिख रहा है। देखिए, ये बगावत हुई शिवसेना में जून 2022 में, उसके तुरंत बाद स्पीकर के पास में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डाली गई ठाकरे गुट की तरफ से, लेकिन उस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। स्पीकर चूंकि बीजेपी के विधायक भी हैं, तो ढुलमुल तरीके से बात आगे बढ़ रही थी, सुनवाई नहीं की जा रही थी। इसके बाद में मई में इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया मई 2023 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा स्पीकर को कि आप एक रीजनेबल टाइम के भीतर आप इस पर फैसला सुनाइए। लेकिन रीजनेबल टाइम तो कह दिया, लेकिन वो टाइम क्या होगा, कोई तारीख वगैरह मुकर्रर नहीं की और इस का फायदा उठा लिया, स्पीकर की ओर से उठा लिया गया। अब वो फिर भी अपना समय लेते गए, ढुलमुल रफ्तार से आगे सुनवाई चल रही थी, तारीख पर तारीख पड़ रही थी। और ऐसे में जब उद्धव ठाकरे ने स्पीकर की शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि आप बताइए कि आप कब तक इस पूरे मामले का फैसला सुना पाएंगे। तब स्पीकर ने कहा कि हमें फरवरी तक का समय दे दीजिए, फरवरी के आखिरी हफ्ते तक का समय दे दीजिए। तब क्योंकि इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि देखिए अभी दिवाली की छुट्टी आने वाली है, उसके बाद क्रिसमस की छुट्टी आएगी, फिर महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है, तो इसमें मुझे समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए फरवरी के आखिर तक का वक्त दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक टिप्पणी की और कहा कि क्या आप चाहते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त तक इस मामले को घसीट लें? तो ऐसे में आप बताइए कि आप कब तक सुनाएंगे। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक तारीख दे दी, 31 दिसंबर की। अब जब 31 दिसंबर की तारीख दे दी तो फिर मामले ने रफ्तार पकड़ी और फिर उसके बाद सुनवाई होने लग गई, दिन ब दिन सुनवाई हुई। और फिर सुनवाई पूरी होने के बाद स्पीकर फिर गए सुप्रीम कोर्ट के पास में और कहा कि देखिए 2.5 लाख कागज जमा हो गए हैं और मुझे अब इन सबको पढ़कर आदेश देना है, तो इतने समय में नहीं हो सकता, आप वक्त बढ़ा के दे दीजिए। तो फिर 10 जनवरी तक का, यानी कि आज की तारीख तक का वक्त दिया गया स्पीकर को। अब मान लीजिए कि अगर आज स्पीकर फैसला देते हैं और ये फैसला जो है एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में आता है और इसके बाद ठाकरे गुट इस फैसले को अगर चुनौती देता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते कई महीनों का वक्त लग जाएगा। और तब तक में महाराष्ट्र में अगले चुनाव, विधानसभा के अक्टूबर में चुनाव होने हैं, तो महीने भर पहले मान लीजिए कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। और तब तक जब फैसला आएगा भी, अगर मान लीजिए ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला आए, तब भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि शिंदे सरकार तो फिर अपना कार्यकाल वैसे भी पूरा कर लेगी। तो आगे पूरा यही कुछ है और इसी वजह से बीजेपी जो है टाइम बाइंग की कोशिश कर रही है। या ये मैं कहूंगा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर, जो कि बीजेपी विधायक भी हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है ठाकरे गुट की ओर से, वो इस तरह से टाइम बाई कर रहे हैं ताकि शिंदे सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा कर ले और मामला घसीटता जाए, खिंचता जाए। अच्छा, एक बताइए जितेंद्र जी के इस के विरोध में
कोई बड़ा प्रदर्शन वगैरह किया उद्धव ठाकरे ने, कांग्रेस ने, शरद पवार ने कि ये इस तरह स्पीकर टालने मामला, कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में? नहीं, कोई बड़ा प्रदर्शन तो जो जब ये बगावत हुई थी उसके बाद में छिटपुट प्रदर्शन हुए थे, कुछ एक जगहों पर टकराव भी हुए थे दोनों गुट के शिवसैनिकों की ओर से, कुछ एक जगह पर रैली मोर्चे वगैरह भी निकले थे, लेकिन ज्यादातर जो है बयानबाजी होती रही। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है शाब्दिक बाण जरूर छोड़े, एक दूसरे के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप ये तमाम होते रहे। लेकिन आज मुंबई पुलिस को ऐसा लग रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला जाता है स्पीकर का, तो फिर ऐसी स्थिति में ठाकरे गुट के जो शिवसैनिक हैं वो कुछ ना कुछ हंगामा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हिंसा की भी आशंका है। और इसीलिए जो शिंदे गुट से जुड़े हुए केंद्र हैं, शिंदे का निवास, उनका दफ्तर और बाकी के जो उनसे जुड़े हुए केंद्र हैं, उनकी पार्टियों से जुड़े हुए, उन सभी ठिकानों की पुलिस सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है। संजय जी, ये बढ़िया है। और दूसरा एक बात और भी है कि बीएमसी का चुनाव की चर्चा ही कोई नहीं करता जितेंद्र जी, वो चुनाव कहाँ चला गया? एशिया का शायद सबसे ज्यादा मालदार आपके यहाँ का महानगर पालिका है, बल्कि कई राज्यों के बजट एक दिन आप ही बता रहे थे मेरे को। क्या स्थिति है, बीएमसी के चुनाव कहाँ गायब हो गए? देखिए, बीएमसी का बजट जो है 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बड़ा बजट है। कई छोटे राज्यों के बजट से बड़ा होता है बीएमसी का बजट। और महाराष्ट्र की, या मैं कहूंगा कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिकाओं में से एक है मुंबई महानगर पालिका। अब इसमें मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए थे साल 2017 में, और फिर 5 साल बाद साल 2022 में चुनाव होने थे। लेकिन पहले जो है कोविड आ गया, तो उसके चक्कर में एक तो डिले हुआ। उसके बाद में ये हुआ कि जो वार्ड थे उनकी पुनर्रचना हुई। जिन जिन वार्डों में चुनाव होने थे, जो 227 वार्ड थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और फिर वो मामला अदालती पचड़े में फंस गया। तो अब ऐसे में उसको कारण बताते हुए सरकार की, चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं करा रही है। और ना केवल मुंबई महानगर पालिका, बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में 10 बड़ी महानगर पालिकाएं हैं। जैसे मुंबई की महानगर पालिका के अलावा नवी मुंबई की महानगर पालिका है, ठाणे की महानगर पालिका है, और दूसरे बड़े शहरों की महानगर पालिकाएं हैं। उनके भी चुनाव पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी के चुनाव 2022 में होने थे, किसी के 2023 में होने थे, लेकिन अब तक ये तमाम चुनाव नहीं हुए। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद या तो ये विधानसभा चुनाव के साथ में होंगे, या लोकसभा और विधानसभा के बीच में इन चुनावों को कराया जा सकता है। ये बीएमसी का कामकाज प्रभावित नहीं हो रहा जितेंद्र जी? इतने लंबे टाइम से बीच में ये बात आई थी, वहां गुपचुप ठेके दे दिए जा रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के, वो सब खेल क्या था? देखिए, ऐसा है कि बीएमसी में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो ये तो सरकार के लिए फायदे की बात है, क्योंकि बीएमसी में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटर होता है सरकार का आदमी। जो आदमी म्युनिसिपल कमिश्नर था इकबाल सिंह चहल, उसी को अब एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, और एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट करता है सरकार को, अर्बन डेवलपमेंट विभाग को। तो सीधे सीधे बीएमसी सरकार के ही कंट्रोल में है। तो ऐसे में शिंदे सरकार, या ये कहें कि जो महायुति है बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार, उसके फायदे में ही ये चुनाव का ना होना। और ऐसे में सरकार जिसको चाहे टेंडर दे सकती है, बीएमसी की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी दे सकती है, क्योंकि जो आदमी बैठा हुआ है इस वक्त, जिसकी जिम्मेदारी है जिस पर बीएमसी को चलाना, वो उन्हीं को रिपोर्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ऐसे में चुनाव जितने दिन चाहे टलते जाएं, इससे कोई कामकाज पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कामकाज हो रहा है वो सरकार की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सेल्फ गवर्निंग का प्रिंसिपल है वो इस वक्त मुंबई में लागू नहीं हो रहा है, और सारा कुछ जो है सरकार ही तय कर रही है मुंबई वालों के हाल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आम आदमी का क्या रिएक्शन है? वो क्या सोचता है कि ये चुनाव टाल दिए जा रहे हैं, बीएमसी के चुनाव नहीं हो रहे, या मुख्यमंत्रियों को इतना हल्ला चल रहा है? आम आदमी के मन में क्या ख्याल आता है? देखिए, आम आदमी के जीवन स्तर में ना कोई सुधार नहीं हुआ है। मतलब चुनाव हो रहे हैं, जब बीएमसी में शिवसेना सत्ता में थी 2022 तक, तभी भी जो है आम आदमी के जीवन में वही दिक्कतें बरकरार थी। जैसे कि कई इलाकों में मुंबई शहर के अभी भी पानी नहीं मिल रहा है। मॉनसून आते ही तमाम इलाकों में पॉटहोल्स जो है वो पैदा हो जाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें गड़बड़ी होती है। फिर अभी हाल ही में हमने देखा कि मुंबई का जो प्रदूषण का स्तर था वो तो दिल्ली को भी क्रॉस कर गया था। पहले मुंबई में उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होता था, क्योंकि समुद्र से जो वेस्टर्ली विंड्स आती थी वो मुंबई के प्रदूषण को जो है उड़ा ले जाती थी। लेकिन मुंबई में हाल के वक्त में जो हवा की क्वालिटी थी
वो भी काफी खराब हुई थी। तो मुंबई वालों के जीवन स्तर में जो है कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा हो या फिर उसके पहले अगर कोई राजनीतिक पार्टी का मेयर बैठा हुआ था मुंबई महानगर पालिका पर, तो मुंबई वालों का हाल वैसा ही है और मुंबई वालों की शिकायतें वही हैं जो अब से 10 साल पहले थी बीएमसी के प्रति। बिल्कुल ठीक बात है। अजय शुक्ला जी, एक और बड़ी खबर आई थी महाराष्ट्र के अलावा, वो थी कि सोनिया गांधी और खड़गे ने कहा कि वो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। इस पर आपकी क्या राय है? जाना चाहिए था उनको या नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था और मैं मानता हूं कि 100% नहीं जाना चाहिए था। और इस बात को सबसे बड़ा, क्योंकि ये अधार्मिक कार्यक्रम है जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। और यह बात मैं नहीं कहता हूं, हम यदि सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चारों शंकराचार्यों ने यह बात कह दी और उन्होंने कह दिया है कि यह धर्म के विपरीत है, क्योंकि धर्म शास्त्र जो कहते हैं जिसके जरिए हम राम को जानते हैं, नहीं तो राम को हम तो नहीं जानते हैं। हमने तो जब यदि पढ़ा नहीं होता शास्त्रों में तो हम कैसे जानते? वो शास्त्र इसके तमाम कारणों से इसे गलत मान रहे हैं, शास्त्र के विपरीत मान रहे हैं, धर्म के विपरीत मान रहे हैं। और यह पूरी तरीके से राजनैतिक कार्यक्रम है और जब राजनैतिक कार्यक्रम है और मर्यादाओं के विपरीत है धर्म की, तो ऐसी स्थिति में इसे धार्मिक रूप दे देने मात्र से तो ये धार्मिक नहीं हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो जाने से मना किया है, नहीं जाना चाहिए था। और मैं समझता, अजय जी मैं वो खत भी पढ़ दे रहा हूँ। श्री जयराम रमेश का खत है। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस के नेता, संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनाव लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। हम 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था को सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और आरएसएस के इस आयोजन के, भाजपा के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अजय जी, भाई एक संजय जी एक बात बताइए, ये धर्म का कार्यक्रम था, आरएसएस कौन होती है इसका निमंत्रण देने वाली, भाजपा कौन होती है निमंत्रण देने वाली? तो साहब आरएसएस वाले, भाजपा के लोग ये निमंत्रण देते घूम रहे हैं। ये राम क्या इनके पट्टा बांधे हुए कोई व्यक्ति हैं? राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जिनको तमाम सारे लोग जो मानते हैं, जो रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या तमाम सामान्य हिंदू जो है वो उनको मानता है। और हिंदू ही नहीं, मुस्लिम्स भी मानते हैं। आप यदि हरियाणा में आ जाएं, आप उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में चले जाएं तो राम राम बड़ा कॉमन शब्द होता है। और राम राम कहना जब कॉमन शब्द होता है, आप इवन मेवात में, जहां अभी नूह मेवात में दंगा हुआ था, वहां चले जाइए, वहां के लोग आपस में जब मिलते हैं तो राम राम ही कह के मिलते हैं। तो आप समझिए, तो राम तो, और जो लिखा है, एक दशरथ के पुत्र राम, एक कण में बसे राम। एक सेकंड अजय जी, जितेंद्र जी जरा आप निखार बना लीजिएगा। स्पीकर ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, चूंकि वो मराठी भाषा में है तो आपको शायद मराठी भाषा में है शायद, तो आपको हिंदी अनुवाद करके दर्शकों को बताना होगा। हम और अजय जी वार्ता कर रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए और फिर हमको बताइए कि मोटी मोटी चीजें हैं क्या। जी अजय जी बता रहे थे, आप राम के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि जो धर्मशास्त्र कह रहे हैं उसके मुताबिक, मैं के लिए हट रहा हूँ संजय जी, आप बताइएगा मुझे उसे फैसला सुन के जल्दी आइएगा। मैं फिर जुड़ूंगा, एक बार फैसला सुनने के बाद मैं फिर जुड़ूंगा। हाँ ठीक ठीक। एक काम करिए जितेंद्र जी, हम लोग अपने दर्शकों के लिए यहीं लाइव में लगा रहे हैं। 2 मिनट रुकिए, यहीं रुकिए, आप सुन के बताते रहिएगा। हम लोग लाइव में सुना रहे हैं इनको। हमारी टीम बस 2 मिनट के अंदर अपने दर्शकों के लिए स्पीकर का फैसला लाइव सुना रहे हैं। स्पीकर ने अपना फैसला शुरू कर दिया है। हमारी टीम सीधे आपको महाराष्ट्र विधानसभा लेके चलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला जो है वो हम लोग सीधा लाइव सुनवाएंगे आपको, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है। मुख्य बिंदु जो है
उसके वो पहले सुनाएंगे राहुल नार्वेकर, और उन्होंने शुरू कर दिया है, पूरे देश की निगाह रखी है कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्या होने जा रहा है। कुछ ही मिनटों में हम लोग सीधे वो फैसला आपको सुनाएंगे। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा निगाहें रखी हुई हैं उस फैसले को लेकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो फैसला। अब ये फैसला मैं सीधा आपको दर्शकों को सुनवाता हूं। आवाज नहीं है शायद। आवाज की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक करिए अगर हो सकती हो तो। ये फैसला पढ़ रहे हैं वो, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पढ़ रहे हैं राहुल नार्वेकर, और मैं भी उसकी क्वालिटी Under 1A, group number 4 consists of petition number 19, again filed by legislator belonging to the UBT faction. Under 21B, challenging the defiance of whip with regards to the speaker's election. Group number 6 consists of petition number 21, again filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B with regards to defiance of whip for the confidence motion. Group number 5 consists of petition number 22 to 24, which has been filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of petition number 17, which has been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the apex court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group. So we shall commence with group number 1. मेरे पास नहीं है, देख लो मेरे पॉकेट में, देख लो पास में। Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shiv Sena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view
the factual matrix, and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if two or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is which among the two fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. The Constitution of Shiv Sena, 2. The leadership structure of the party, and 3. The legislative majority if two or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both in the previous paragraphs I've recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the Constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party, and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the Constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2. The leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the Constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1. The 2018 Constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended Constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment, and thus the said Constitution of 2018 has to be taken as the Constitution which is done with the consent of both the factions, as the said Constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions, and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said Constitution of 2018. And 4. The statement of Sri Yogesh Kadam that the filing of 2018 Constitution
along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Shri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondents submitted that both the said letters do not mention anything about the purported amendments to the constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27 to number 322. However, in the said SLP, there was no mention about the existence of any such letter dated 4th April 2018. The word submitted appearing in paragraph 168 of Subhash Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Shri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Shri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the Speaker in August 2023. Further, even the additional replies filed on 25/10/2023 in the present proceedings, the aforesaid petition has been reiterated by the respondents. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant constitution for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. A. As per the Honorable Apex Court, if both the factions have submitted different versions of the constitution of the party, then in that case, what has to be taken into account is the constitution which was submitted to the ECI with the consent of both parties before the rival factions emerged. Before recording further conclusions, I find it imperative to reiterate that pursuant to the initiation of these disqualifications, the Maharashtra Legislature Secretariat had vide letter dated 7 June 2023 requested the Office of the Election Commission of India to provide a copy of the party constitution stroke memorandum stroke rules and regulations ये फैसला लगातार सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और मैं अपनी टीम से संजय जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो ठीक करवाइए। मैं टीम से कहूंगा यार एक बार ऑडियो चेक करें फिर आप लोग, क्योंकि आप क्रूशियल पार्ट है, अब मुख्य हिस्सा आप सुनाया जा रहा है। 2 June 2023 provided a copy of the constitution and rules of Shiv Sena as available on the record of Election Commission of India. Further, with respect to amendments, if any, to the said constitution of the party, the Election Commission requested the Legislature Secretariat to refer to the order dated 17 February 2023 passed by the ECI in dispute case number 1 of 2022. Having perused the same, it has to be noted that the copy of the constitution of Shiv Sena provided by the ECI does not bear any date or year, but as per the ECI, that which is provided vide the reply is the only constitution of Shiv Sena available on the record of the ECI. Further, with respect to the amendments, if any, to the said constitution, the Election Commission, vide its order dated 17 February 2023, has held in paragraph 132 4b that the amended constitution of 2018 is not on the record of the commission.
Thus, the petitioner's submission that the constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted, as I am bound to follow the directions of the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, and accordingly take into account the constitution which the Election Commission has provided. In my jurisdiction under the 10th schedule of the Constitution of India, I cannot delve into any other factor while deciding which is the relevant constitution. As prima facie, it is evident from the records of the ACI that the 1999 constitution is the one which was submitted to the ECI by the Shiv Sena before rival factions emerged. Further, it is also necessary to mention that the petitioner's submission that the constitution of the year 2018 was submitted to the ECI by referring to the letter dated 4th April 2018 cannot be accepted. A bare perusal of the said letter dated 4th April 2018, by way of which the petitioner based their claim of submission of the said constitution to the ECI, does not bear any content which shows that an amended constitution was submitted to the ECI. The said letter only refers to the election held and the results thereof, and nothing more. Further, on closer examination of the special leave petition filed by Mr. Uddhav Thackeray before the Honorable Supreme Court, challenging the ECI decision SLP number 3997 of 2022, I find that exactly same claim has been made about the letter dated 27/2/2018, and there is no mention about the new letter of 4th April 2018. Accordingly, said letter of 2/7/2018 is on the website of the Election Commission of India. However, there is no document relating to the constitution annexed to it. Hence, on this ground also, petitioner's submission that the constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted. Petitioner's submission that submitted before the speaker, petitioner's submission that into inverted submitted before the speaker would mean into inverted annexed by the petitioner and the respondents in their respective petitions and replies thereto cannot be accepted, as there is a clear provision under the 1986 rule where the leader has to submit the party constitution. Rule 3 subclause 1 subclause B of 1986 rule mandates that the leader into inverted shall furnish into inverted a copy of the rules and regulations, whether known as such or as constitution or any other name, of the political party concerned. Further, Rule 3 subclause 4 contemplates that whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the legislature party under Rule 3 subclause 1, he shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date on which such change has taken place, or within such further period as the speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the speaker with respect to such change. Thus, the submission of constitution before the speaker has to mean submission under Rule 3 of 1986 rules. However, till date, Shiv Sena has not submitted any constitution on the record of the speakers of the speaker under the said Rule 3. In view of the above observations and finding, I need not further analyze any other submission in this regard made by the parties, and I hold that the constitution of Shiv Sena provided by Election Commission of India, vide letter dated 22nd June 2023, is the relevant constitution of Shiv Sena for determination of the preliminary issue as to which faction is the real political party. Constitution of Shiv Sena held to be the relevant constitution is hereinafter referred to as the SS Constitution. The leadership structure relevant for the determination. Learned Senior Advocate Mr. Kamath's submission that the leadership structure
which is relevant for the purpose of deciding the preliminary issue is the leadership structure which is reflected in the communication dated 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena, produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. Respondents objected to such production on the ground that it is not permissible to produce affidavits of others along with petitioner's own affidavit in lieu of chief examination without the author of the said affidavits subjecting themselves to cross-examination. In any event, during the arguments, Mr. Kamath did not rely on these affidavits and limited his submissions to the 2018 leadership structure as available on the ECI website. Mr. Jethmalani, in turn, focused his submission to buttress the ground that the said leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, and thus the same would be contrary to the findings of the Honorable Supreme Court in paragraph 168 of Subhash Desai. Mr. Jethmalani further relied on the legislative party leadership to submit that the legislative party also forms part of the leadership structure, as it is not only mentioned in the SS Constitution, but there is no dispute regarding the said members being part of the Pratinidhi Sabha under the SS Constitution. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant leadership structure for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. The submission of Mr. Kamath, the jurisdiction under the 10th schedule, only mandates a prima facie adjudication as to what the leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not the leadership structure available on the record of the ECI was pursuant to a validly held election is a correct position, and hence I concur with the same. Petitioner's submission that in these proceedings the respondents cannot challenge the organizational election results available on the record of the ECI, as the 10th schedule does not permit the raising of any such defense, is a correct position, and hence I am in agreement with the same. Respondent submission that the leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, does not arise at this juncture, as it is a submission which has to be considered while determining whether the said leadership structure can be relied upon for the purpose of determining which faction represents the real political party, which would be dealt with at the appropriate juncture. The only question which is to be determined in the current part of the order is what and who all constituted leadership structure of Shiv Sena at the relevant time. Respondents have led detailed evidence, and despite being confronted during cross-examinations, they have been able to demonstrate that no organizational elections were held on 23/1/2018. On the contrary, in the affidavit in lieu of examination of Chief of Shri Sunil Prabhu, PW1, has stated that organizational elections were held on 23/1/2013 and 23/1/2018. However, Shri Sunil Prabhu has not claimed any personal knowledge of the same or and whether he was present during the said elections. During his cross-examination, he was confronted with the letter dated 28/1/2013. Thereafter, a specific question was posed to him by Mr. Jethmalani as to whether he voted in the said election, to which he responded in the affirmative. The contents of the said
letter clearly stated that all the candidates were declared unopposed. The contradiction was also put to the witness by Mr. Jetmalani in cross-examination. However, no justification for the same was put forth by the witness. In view of the above evidence and records before me, prima facie indicate that no elections were held in the year 2018, 2013, as well as in the year 2018. However, I, as the Speaker, exercising jurisdiction under the 10th schedule, has a limited jurisdiction and cannot go beyond the record of the ECI as available on the website, and hence I have not considered this aspect while determining the relevant leadership structure. Thus, in view of the above conclusions, I find that the leadership structure of Shiv Sena reflected in the letter dated 27th February 2018, available on the website of the ECI, is the relevant leadership structure which has to be taken into account for the purpose of determining which faction is the real political party. The question whether which faction is the real political party is discernible from this 2018 leadership structure is discussed in paragraph 112 to 131 infra of the present order. The leadership structure so determined as the relevant leadership structure for the purpose of these disqualification petitions are hereinafter referred to as the 2018 leadership structure. Since in these proceedings, both the factions are claiming to be the real political party, rival factions have emerged in the Shiv Sena. In view of the fact that rival factions have emerged and both the factions are claiming to be the real political party, it is imperative to prima facie determine when did the rival factions emerge. Thus, it is necessary to determine the relevant day on which rival factions emerged before further venturing into which of the faction was the real political party when rival factions emerged. At the outset, I must set straight the point that the determination of the Speaker exercising jurisdiction under the 10th schedule while deciding who the real political party is mandates only a preliminary inquiry which has to be done prima facie by taking into account material officially before the Speaker as the Master of the Legislative Assembly. I shall consider the facts relevant for the determination on what is before me as the Speaker of the Legislative Assembly. As noted by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, on 21st June 2022, there was no material available before the Deputy Speaker to infer the emergence of any rival faction. However, after taking on record, the resolution dated 21st June 2022, passed by the SSLP, disputed by the respondents, the very next day, the then Deputy Speaker received a resolution disputed by the petitioner dated 21st June 2022, received by the then Deputy Speaker on 22nd June 2022, contrary to the resolution dated 21st June 2022. Thus, from this fact alone, it is evident that there emerged two factions of the Shiv Sena from 21st June 2022 itself, but the same came to be officially on record of the office of the Speaker and or Legislative Secretariat on 22nd June 2022. At this juncture, it is imperative to refer to paragraph 119 of Subhash Desai Supra, where the Honorable Apex Court, while discussing the legality of the recognition of leader and the whip of Shiv Sena accorded by the letter dated 3rd July 2022, held that the Speaker ought to have taken into consideration the split that took place within the Shiv Sena, which were discernible from two sets of resolutions appointing two different leaders and whips placed on the record by Shiv Sena before the Legislature Secretariat. This paragraph into bracket 119 read with Honorable Apex Court's finding recorded by the Honorable Apex Court in paragraph 157 of Subhash Desai Supra makes it clear that the law laid down by the Honorable Supreme Court is that in view of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule, when rival factions emerge as a result of rift stroke split
in the party, the speaker has to necessarily find which faction is the real political party while recognizing leader and the whip of the party. Thus, in view of the facts recorded in the preceding paragraphs and keeping in view the principles enumerated by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra as recorded in paragraph 84 herein above, I have come to the following conclusion that the emergence of the two factions of Shiv Sena can be inferred from 21st June 2022 itself, and the same came to be a matter of official record of the office of the Speaker and of the Legislature Secretariat on 22nd June 2022. Conclusion: having decided the 1. Relevant constitution of Shiv Sena, 2. Leadership structure, and 3. The relevant point of the relevant point for the purpose of determining the preliminary issue, I have made the following analysis, observations, and determinations on the preliminary issue of which faction was the real political party when two factions emerged. For the purpose of analyzing, discussing, and determining the issue, the faction of the petitioner is hereinafter referred to as UBT faction, and likewise the respondent's faction is referred to as the Shinde faction. The applicability of the test of aims and objectives. I am not going into the details of reading the applicability of the test of aims and objectives, because as you are aware that in accordance with the directions of the apex court and otherwise, the speaker is not required to get into the political thicket with regards to the aims and objectives of a political party. So I'm restricting it to pronouncement, and you can have a look at it once you apply for the certified copy. The reason why Shiv Sena constitution assumes significance is to analyze whether the question of which faction is the real political party is discernible from the leadership structure identifiable from the said Shiv Sena constitution. So the Shiv Sena constitution is relevant to the extent of identifying the leadership structure. Leadership structure as a criteria to determine who was the real political party. As I have already held, which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shiv Sena to be taken into account for deciding the preliminary issue, I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same. The UBT faction made, there are submissions made which have been recorded of both the sides, which are at paragraph 113 and 114 of my order. In view of the above recorded submissions of the parties, there emerges two further questions: whether 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of Shiv Sena. Number two, whether will all the Paksha Pramukh whether will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party. So we further have to derive get answers to two more questions. The primary one being whether 2018 leadership structure is in conformity as provided by the constitution, and number two, whether the will of the Paksha Pramukh and or majority of the leaders reflects the will of the political party. As there are contrasting submissions on the question, it is necessary to peruse the SS constitution and the 2018 leadership structure and then record a finding as to whether the 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of the Shiv Sena. Thus, I have taken a comparative look at the 2018 leadership structure and the Shiv SS constitution and have arrived at the following observations and conclusions. A. 2018 leadership structure mentions
Shiv Sena Paksha Pramukh into bracket president as the highest office of the SSPP. However, the SS Constitution, in the SS Constitution, the highest office of the Shiv Sena political party is Shiv Sena Pramukh, but the said Constitution distinguishes highest office and the highest authority and provides that Rashtriya Karyakarni is the highest authority whose decision shall be final. Shiv Sena SS Constitution provides that the members of the Rashtriya Karyakarni shall be called as Shiv Sena leaders and provides for a total number of 19 members, out of which 14 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 5 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages only 13 members in the Rashtriya Karyakarni, out of which 19 are to be elected and the remaining 4 are to be appointed. SS Constitution provides for a total number of 21 deputy leaders, out of which 17 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 4 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leaders structure envisages 33 deputy leaders, out of which 21 are to be elected and the remaining 12 are to be appointed. The 2018 leadership structure provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis secretary, samanvayak and sanghatak. However, the constitution of Shiv Sena provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis president, sarchitnis, general secretary, koshadhyaksha, treasurer. From the observation recorded in the preceding paragraphs, it is evident that the 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena. In view of this finding alone, it could very well be concluded that the 2018 leadership structure, which is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, cannot be taken as the yardstick to determine which faction was the real political party at the relevant point of time. In view of the same, I have come to the conclusion that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide a reliable outcome and or answer the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the said preliminary issue. Nevertheless, I am inclined to look at the second question regarding paragraph 115 here and above, where will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party, so as to not leave any stone unturned in arriving at a decision. The determination of this question arises out of the alternate submissions made by the UBT faction that the 2018 leadership structure has to be taken ex facie and the determination of which faction was the real political party has to be solely based on the said leadership structure without a comparison of the said structure with the leadership structure provided for in the constitution of the Shiv Sena. The said proposition would run counter to the principles laid down by the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, where it was specifically provided that the leadership structure which has to be taken into consideration while determining the real political party has to be identifiable by the relevant constitution. Thus, although in the light of my finding on the preceding question, the aspect need not be looked into. However, I intend to look into the said aspect any which way, considering the gravity and importance of the dispute. Hence, following are my observations, findings, and conclusions on the said aspect. UBT faction has submitted that the decision of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party, and thus, if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh constitutes the will of the political party. This proposition is devoid of merit, as I do not find any substance to allow the same. The reason for the same are recorded herein below. The
proposition perhaps would have been a valid point if the party president was the sole repository of the decision making with respect of the policy and administration of the party. For analyzing the said submissions, a perusal of the SS Constitution was made. The SS Constitution provided that Rashtriya Karyakarni shall be the highest authority of the party, and its decision in all matters concerning the party policy and party administration shall be final. It is also to be noted that the Paksha Pramukh is only a presiding member of the said highest authority in the party, and in no way is the sole repository of decision making in the party. Thus, in view of the same, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. It would be appropriate to note that the SS Constitution does not even have a post called Paksha Pramukh. However, it was argued by the UBT faction that the nomenclature difference in the 2018 leadership structure and the SS Constitution is not a relevant factor for the purpose of deciding the preliminary issue. Even though I have held in paragraph 117 that 2000 leadership structure is not at all in conformity with SS Constitution, I shall consider this submission. The Constitution of Shiv Sena provides for Shiv Sena Pramukh. The submission of the petitioner that Shiv Sena Pramukh mentioned in the SS Constitution is the same post of Shiv Sena Paksha Pramukh termed in the 2018 leadership structure. By relying on the powers of Shiv Sena Pramukh, it was argued by the UBT faction that he is the authority under the party constitution vested with the powers to remove any member of the party. Thus, it was further argued that an authority who is vested with such power of removal reflects the will of political party with respect to removal of members from and for anti-party activities. However, a complete reading of the said provision in the party constitution reveals that the said submission is factually wrong. The said provision in relation to the powers of Shiv Sena Pramukh clearly provides that such a power is not absolute, and it has to be exercised in consultation with the Rashtriya Karyakarni. Further, it has to be noted that such a power is only available to the Shiv Sena Pramukh for the purpose of removal of members mentioned in Article 8, Schedule B of the said Constitution. The said schedule does not deal with leaders of the party. Leaders of the party is given under Schedule A of the said article. Thus, Shiv Sena Pramukh does not have any power to remove any leader of the party. Thus, the submission of the petitioner that Shri Uddhav Thackeray, Vide, letter dated 30/6/2022, had removed Shri Eknath Shinde from the post of Shiv Sena leader cannot be accepted, as such power are not vested with the party president. Hence, on this ground also, the submission that the decision and or the will of the Paksha Pramukh is synonymous with the will of the political party cannot be accepted. If this proposition is accepted, then in a situation where the party president, who is also a legislator, itself defects, then he could simply escape the wrath of the 10th schedule by pleading that his decision is the will of the party. Further, if this proposition is to be accepted, it would mean that no member can ever voice concern against the party president, and the party president might possibly be able to seek disqualification against any member who questions his credibility. This would run contrary to the concept of intra-party dissent. In view of the clear and unequivocal finding of the Honorable Supreme Court at paragraph 183 to 190 of Subhash Desai, I will be falling foul of the judgment of the Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan, wherein the constitutional validity
of the 10th schedule was itself upheld on the grounds that it is not an anti-dissent law if this proposition is accepted. I shall now proceed to consider whether the will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. An alternate submission was made that even if the Paksha Pramukh is not accepted as the repository of the will of the political party, the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party. This proposition is also devoid of merit, and I do not find any substance in it for following reasons. In a circumstance where there is no dispute amongst the leaders identifiable by the constitution of a political party, the proposition would have held water. However, the factual matrix of the present matter is different. This is a matter where there is a dispute within the leadership structure itself. It is to be noted that in the present matter, rival factions have emerged in the legislature party, political party, and thus inevitably amongst leaders of the party as well. Thus, it would not be wise to apply this proposition in the present matter. The existence of split stroke rift in the leadership structure is admitted by the petitioner and or the UBT faction, as can be inferred from the petitioner's affidavit in lieu of examination in chief of PW1, petitioner himself, that the leader of the UBT faction did not have the support of all the members of the 2018 leadership structure when rival factions emerged. Thus, the submission that the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party could have perhaps be applied in a situation where there is a dispute between some members of the party and the elected leadership. In such a case, the leadership of the party could have possibly taken the stand that their decision would have to be taken as the decision and will of the political party until they are so removed from the leadership structure by a mechanism recognized by the constitution of the said political party. However, as I have noted earlier, in the present matter, rival claims have emerged wherein the leadership structure about the leadership within the leadership structure about the leadership itself. In such a situation, one leader's contention that his will is the will of the political party would be contradiction in terms. Thus, when there is a vertical rift in the party and two factions within the said leadership structure emerge as a result of the said rift, leaders of either faction, both Shri Uddhav Thackeray and Shri Eknath Shinde, could equally claim to represent the will of the political party. In that case, it would not be appropriate to take their decision as the decision that carries the will and wish of the political party when the question of which faction is the political party is being considered. There possibly lies one more aspect which could be considered. Does the stand/stroke decision of the majority members of the leaders within the leadership structure identifiable and appointed according to the constitution of the political party could be construed as the will and desire of the political party in the event there is a dispute within the leadership structure? For the purpose of answering this question, one must look into the constitution of the political party. In an event where the party constitution provides for a mechanism to resolve a conflict of decision within the leadership structure, then in that case, it would have been a guiding factor. However, if the party constitution does not provide for such a mechanism, then in that case, it would not be appropriate to say that the decision of the majority leaders would have to be accepted as the one which conveys the will of the political party. This aspect need not be further considered in view of the fact that in any case, UBT faction has not placed any material on record or even suggests that any meeting of the Rashtriya Karyakarni was called for where any decision in relation to the real political party
was resolved so as to identify the leaders and or the whip who carried the will of the political party. Thus, in the absence of any such material, including any majority decision of the Rashtriya Karyakarni in relation to the real political party, identifying the leader and or the whip who carried the will of the political party would be an impossible task. Any conclusion reached would be without basis in law and evidence of fact. The submission that the UBT faction shall be taken as a real political party is entirely based on the conjuncture that if there will be a decision taken in relation to the political party by Rashtriya Karyakarni, then UBT faction would have had the majority. At this juncture, the petitioner's claim about a meeting purportedly held on 25th June 2022 has to be dealt with. It is the petitioner's case that Rashtriya Karyakarni meeting was held on 25th June 2022 and certain resolutions were passed. In support of this case, petitioner has produced certain resolutions of 25th June 2022. Those documents are disputed by respondents. Mr. Jetmalani, learned counsel for respondent, objected to the said documents being considered on the ground that they were forged and fabricated and demonstrated this before me by showing two separate documents, one annexed by the petitioner Sri Sunil Prabhu to his affidavit in lieu of examination of chief, and the other set of the same documents which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2. In the first set of documents annexed to the affidavit in lieu of examination in chief, termed as minutes of the meeting of Rashtriya Karyakarni, and purportedly 7 resolutions passed in the said meeting. In none of the resolutions there is any signature of any person whose name are shown on the said document. Only on page 105 of Sri Sunil Prabhu's affidavit in lieu of examination in chief, there is a sole signature of Sri Vinayak Raut, who is shown as Shiv Sena secretary. The perusal of the said document shows that the meeting was termed as Rashtriya Karyakarni. In the second set of documents, which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2, the resolutions are shown on different pages, and they are not part of any minutes which was annexed to the affidavit in lieu of examination in chief of Sri Sunil Prabhu. These resolutions are shown on the letterhead of Shiv Sena, Rashtriya Karyakarni Baitak into bracket Prathinidhi Sabha. Petitioner relied on these documents to show that 7 resolutions have been passed, but in none of these documents there is even a single signature, save and except for signature of 2 persons. The name mentioned as proposer and seconder are not even members of Rashtriya Karyakarni, like Sri Rahul Shevaye, who is not a member of Rashtriya Karyakarni, who has stepped into the witnesses and led evidence that there was no such meeting. The same is the case with Sri Vinayak Raut and Sri Arvind Sawant. They are also not members of the said Rashtriya Karyakarni. The petitioner had claimed that the said meeting was held on 25/6/2022 at Sena Bhavan, whereas Sri Uddhav Thackeray claimed that the said meeting was held through video conference. This has been stated by Uddhav Thackeray in his submission before the Election Commission filed on 9/1/2023. This itself casts a doubt on the authenticity of the documents and holding of any such meeting of either Rashtriya Karyakarni or Prathinidhi Sabha. The petitioner himself is not sure whether it was Rashtriya Karyakarni or Prathinidhi Sabha. Thus, in view of the above, the said documents cannot be permitted to be relied on. Petitioner suggests that a look into how the Shiv Sena settled conflict or decisions within the leadership structure in the past might shed some light into this. However, in the present matter, no such material are placed before me to even suggest such instances which happened in the past.
where the majority decision within the leadership structure is taken as the will of the political party. It is to be also noted that the petitioner has neither placed nor provided any material to show that historically the decision of the majority within the leadership structure is taken to be the final decision of the political party whenever there was a conflict of decision within the leadership structure. Thus, for this reason also, it would not be appropriate and correct to accept the proposition that the decision of the majority leaders within the leadership structure would have to be accepted as one which conveys the will of the political party. As the as a passing note, I must also add that the majority rule possibly could have been applied in a normal situation where there is dissent in respect to some policy and or administrative decision of the party. However, such a simple rule stroke test shall not be applied to determine an essential question in existential question in relation to the political party, such as in the present matter, where which faction is the real political party is required to be determined. Thus, in view of the decisions recorded herein above, I am not inclined to accept submissions of the UBT faction that will of the majority leaders in the 2018 leadership structure is synonymous with the will of the political party. Thus, from paragraph 112 to 128, I have dealt with whether the relevant leadership structure read with the Shiv Sena constitution, SS constitution, provides answer to the question which faction is the real political party. In view of the same, I record my conclusion and finding thereon as under. The 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena and thus does not provide a reliable outcome and or answer to the question which faction is the real political party and hence cannot be relied upon to determine the preliminary issue. Decision of the Paksha Pramukh is not synonymous with the will of the political party and thus if there is a rift in the leadership structure, the decision of the Paksha Pramukh cannot be taken as the will of the political party. When there is a vertical rift in the horizontal leadership hierarchy of the political party and both the factions within the said leadership structure emerged as a result claim to represent the will of the political party, it would not be appropriate to apply the test of which of the said faction decision carries the will and wish of the political party. In the case of Shiv Sena political party, will of the majority leaders in the 2018 leadership structure cannot be said to be synonymous with the will of the political party. In view of the findings recorded in the preceding paragraph, I hold that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide any reliable answer to the question which faction is the real political party and consequently the 2018 leadership structure cannot be yardstick to determine which faction is the real political party. With regards to the legislative majority, I am not going to spend much time because that question is rather clear. In view of the above observations and findings, I hold as follows. Which faction is the real political party is discernible from legislative majority which existed when the rival factions emerged. Legislative majority which existed when the rival factions emerged can be discerned and or inferred from 1. The Shinde faction resolution dated 21st June 2022 and 23rd June 2022 available on record of the legislature secretariat and the admitted position which can be inferred from the initiation of petitions against 38 legislators of Shinde faction
by the UBT faction. Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions, and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. In view of my findings that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged and that Sri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022, I further conclude that Sri Bharat Gogaole was validly appointed as the whip, as that was the reflection of the will of the Shiv Sena political party as on 21st June 2023. Following are the final conclusions, which is again a summary. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions, and conduct? I will also read the final conclusion. Following are the final conclusions from the analysis, observations, conclusions, findings, and rulings recorded from paragraph 82 to paragraph 158 here and above. I conclude as follows. Shinde faction was the real Shiv Sena political party when the rival factions emerged on 21st June 2022. Sri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Sri Bharat Gogaole was validly appointed as the whip of Shiv Sena political party on 21st June 2023. Sri Eknath Shinde was validly appointed as the leader of the Shiv Sena political party on 21st June 2023. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions, and conduct? Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 here and above. The various grounds on which the petitioner based the plea for disqualification is dealt with, where the alleged conduct of the respondent is purportedly becoming totally incommunicado attracts disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. Whether the alleged conduct of the respondents in purportedly becoming totally incommunicado attracts disqualification under paragraph 2 subclause 1 subclause A of the 10th schedule. The first ground on which the petitioner sought disqualification of the respondents is that the respondents became incommunicado. The submission cannot be accepted and the respondents cannot be held to be disqualified on this ground for the following reasons. The ground is a mere allegation, and apart from mere assertion that the respondents have gone incommunicado, the petitioner has not put forth any evidence or material to substantiate it. For instance, the petitioner has not provided any material about who was sought to be contacted and by whom, when such an attempt was made, etc. A mere unsubstantiated statement that the legislators have gone incommunicado cannot even be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. When rival factions emerge in a political party, especially within the leadership, it is possible for both the factions to allege that the other faction has gone incommunicado. In such a circumstance, especially in the light of the law laid down by the apex court in Subhash Desai Supra, it would not be correct to hold any faction to have incurred disqualification for going incommunicado without first determining which of the faction is the real political party, reflecting the will of the political party. Also, having held that the Shinde faction was the real political party when the rival factions emerged, the submission of the petitioner that the respondents have gone incommunicado ceases to hold any meaning for the purpose of disqualification.
On the 20th of June 2022, elections for the Legislative Council were held. In his cross-examination, Shri Sunil Prabhu, PW1, stated that all the MLAs were present for the same. In the face of this evidence, it would not be possible to accept that the legislators had gone incommunicado. Respondents have placed that they have been in touch with the UBT faction. They substantiated it by stating that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Shri Uddhav Thackeray. This fact was not denied by the petitioner, Shri Sunil Prabhu, when a suggestion was put to him in the cross-examination. In fact, the petitioner admitted that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. Also, three of the witnesses for respondents have testified that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents. On 21st June 2022, on the instructions of Shri Uddhav Thackeray, the testimony stood the test of cross-examination and the petitioner could not establish otherwise. Thus, on this count alone, or this count also, it would not be possible to accept the legislators were incommunicado, Whether the deliberate absence of the respondent in the SSLP meetings purported to be held on 21st June 2022 attracts disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The second ground on which the disqualification is sought is that the respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. Petitioners relied on the attendance sheet register of the meeting dated 21st June 2022. After having considered the submission advanced on this ground, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground. In view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when factions emerged, and 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment the faction emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 is liable to be rejected. Irrespective of the conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 21st June 2022. This is because of the following reasons. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 21st of June 2022 to claim that all those MLAs who were signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, the UBT faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu, PW1, with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition, reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten date of 21st June 2022, whereas the copy verified as the true copy of the original produced along with the petition does not have it. Further, Shri Sunil Prabhu stated in his cross-examination that the documents relied as the attendance sheet was in fact a register of MLAs to whom the whip of 21st June 2022 was served and received. So, facts show 1. There are glaring discrepancies in the said attendance sheet. 2. The statements of Shri Sunil Prabhu
shows the document relied upon as attendance sheet of MLA present on 21st June 2022 is in fact a register of service and receipt of the whip dated 21st June 2022 of the MLAs. Thus, the said document is unreliable and cannot be taken as proof of non-attendance of respondents in the meeting held on 21st June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 has to be rejected. Further, all the respondents have denied the receipt of any whip for attending the meeting on 21st June 2022. Countering this, petitioner Shri Sunil Prabhu, in his affidavit in lieu of examination in chief, stated that the whip for 21st June 2022 meeting was sent via WhatsApp by Shri Manoj Harishchandra Chaugle to Shri Prabhakar Kaye, PA of Shri Eknath Shinde. In the cross-examination of Shri Sunil Prabhu stated that the whip was sent via WhatsApp to all the respondents, who according to him were not traceable. However, petitioner has not offered any statement or any material to even suggest that such WhatsApp messages were sent to other respondents. Thus, the petitioner has failed to establish that whip stroke notice was served upon the respondents in petition number 2-15, directing them to attend the meeting on 21st June 2022. As to the service of whip on Shri Eknath Shinde, the only material produced by the petitioner is an alleged screenshot of the WhatsApp message sent by one Shri Manoj Harishchandra Chaugle to one Shri Prabhakar Kaye. This does not constitute proof of any notice whip was served upon Shri Eknath Shinde, directing him to attend the meeting on 21st June 2022. Further, a perusal of the aforementioned WhatsApp message allegedly sent to the PA of Shri Eknath Shinde shows that the said message was sent at 12:31 p.m. on 21st June 2022 for a meeting which was allegedly scheduled for 12:30 p.m. Thus, it is abundantly clear that none of the respondents were ever served any notice whip for the alleged meeting dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, also, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022 must be rejected. The third ground on which the disqualification of respondent is sought is that the respondents deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022. Petitioner relied on the attendance sheet register of the meeting dated 22nd June 2022. After having considered the rival submissions, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground in view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when rival factions emerged. 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 must be rejected. Again, even if I was to take different view about which faction was the real political party, still the respondents could not have been held disqualified on the grounds that respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022 for the following reasons. I am unable to accept the petitioner's submission that non-attendance of the SSLP meeting would make the respondents liable to be disqualified under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. I am of the view that non-attendance of party meetings, including legislature party meetings, would not attract disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule of the Constitution. Such an action cannot indicate that the members have voluntarily given up his membership of the political party. Not attending party meeting and voicing a difference of opinion outside the house are matters between the members and his party and have nothing to do with clause 2(1)(a) of the 10th schedule. Non-attendance of the meeting can at the most be termed
as an act of dissent within the party. If viewed as a form of expression, it would be protected by freedom of speech and expression, which includes dissent and is not only an integral part of fundamental rights under Article 14, 19, and 21 of the Constitution, but is an aspect of the basic structure of the Constitution also. Therefore, even if the alleged non-attendance is seen as an expression of dissatisfaction, it cannot be treated as conduct attracting disqualification within the purview of paragraph 21A of the 10th schedule. Further, I find the petitioners' reliance on Shriman Bayasaheb Patil versus Karnataka Legislative Assembly 2020 2 SCC 595 is misplaced, as in that matter the disqualification was not only on the grounds of non-attendance of a party meeting but was found to attract disqualification when considered with the surrounding circumstances, such as non-attendance of the assembly session along with non-attendance of meetings. Petitioner relied upon the attendance sheet of the 22nd June 2022 to claim that all those MLAs who had signed the said attendance sheet were present in the meeting, while those who did not sign were not present. Based on this document, UBD faction claimed that respondents remained deliberately absent. A comparison of the original attendance sheet produced along with the affidavit in lieu of chief examination of the petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 with the copy of the attendance sheet produced and verified as a true copy along with the petition reveals that the two do not match. There are glaring discrepancies. The copy claimed to be the original of the said attendance sheet has a handwritten portion on top in which it is not of it which is not present in the copy annexed to the petition, verified as the true copy of the original. The original of the said attendance sheet has 17 signatures, and in the copy annexed in the petition, verified as true copy of the original, has only 15 signatures. Thus, glaring discrepancies in the said attendance sheet makes the said document unreliable and hence cannot be taken as proof of deliberate non-attendance of respondents in the meeting held on 22nd June 2022. Hence, on this count as well, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 is liable to be rejected. With in view of my conclusions reached above and the findings that the Shinde faction was the real political party when rival factions emerged, it would not be correct to say that respondents have incurred disqualification under paragraph 21A and the 10th schedule by passing the resolution dated 21st June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for passing the resolution dated 21st June 2022 must be rejected. The next ground on which disqualification of respondents is sought is that the respondents acted in concert with BJP. This ground is a mere allegation, and apart from the mere statement that the respondents have acted in concert with the BJP, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Thus, a bald, unsustained statement that the legislators have acted in concert with the BJP cannot be a ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. The next ground on which the petitioner seeks the respondents' disqualification is that they made anti-party, anti-coalition statements. Again, this ground is a mere allegation, and apart from a mere statement that the respondents have made anti-party, anti-coalition statements, the petitioner has not provided any material to substantiate the same. Media reports relied on the petitioner cannot be taken as conclusive evidence of anti-party activities. It can at most be only considered
hearsay. Thus, a mere unsubstantiated statement cannot be ground to attract disqualification under paragraph 21A of the 10th schedule. In conclusion, I would like to make some observations about dissent, indiscipline, and what acts as indiscipline would attract disqualification under the 10th schedule. If some member or members in a given case go overboard and make some statements or do some acts which may be considered indiscipline, it would be for political party to deal with them appropriately. Looking at the degree and gravity of the indiscipline, the concerned member may be censored, admonished, or reprimanded, or given a mere extreme punishment such as suspension or expulsion from the party, as may be warranted by party rules. The 10th schedule is not intended as a device to be used for imposing intra-party discipline, much less for administering the party. No party leadership can use the provisions of the 10th schedule as a deterrent to stifle the collective dissent of large number of members by threatening them with disqualification under the 10th schedule. In a given case, when a tussle for leadership arises between leaders in a political party, the elected members, as indeed the common party workers, usually cannot remain mute onlookers. They are compelled to choose sides. Wherever, whatever else may be the consequences of this action or inaction, the parties cannot expect that the high office of the speaker can be used to eradicate opposition or quell dissent in party ranks by employing the mechanism of the 10th schedule. In any case, the speaker has no role to play in this game of political tussle between warring party leaders. The speaker merely goes to the letter of the law and the spirit behind introduction of penal consequences in the 10th schedule, which in my considered view is to preserve the democratic foundations of the legislature or the parliament. I must keep in mind this object underlying the 10th schedule and ensure that the dispute falls within the provisions of paragraph 21A and B, and that his powers are not sought to be invoked with ulterior motives for party gain. In view of my conclusions and findings recorded herein above, petition number 1 to 16 of 2022 are hereby dismissed. Group 3 deals with petition number 18, which is also under paragraph 21A. So I am only reading the operative part because the preliminary issues, the ruling will be the same on that. So I'll go to the operative part of it. You can deal with the judgment order with regards to the other aspects. Yeah. In view of my conclusion and findings recorded herein above, petition number 18 of 2022 is hereby dismissed. Group 4, petition number 19, which is filed by legislator belonging to the UBT faction under 21B, challenging the defiance of whip in the speaker's election. Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on various grounds. Both the petitioners and respondents' submission are recorded in section 2 herein above. However, the prayer for disqualification in the present petition is restricted to the alleged violation of whip dated 2nd July, allegedly issued by the petitioner in respect of the election of the speaker held on 3rd July 2022. Other amendments are all repetitions
of submissions in petition number 1 to 16 and petition number 18 of 2022. Thus, my finding thereof may be read and referred to in respect of the averments under paragraph 2, subclause 1, subclause A of the 10th schedule. Thus, the only ground on which the petitioner sought disqualification of respondent is that the respondent has violated the whip dated 2nd July, allegedly issued by the petitioner in respect of election of the speaker held on 3rd July 2022. The submission cannot be accepted. This submission cannot be accepted, and the respondents cannot be held to be disqualified in view of my conclusion in respect of the real political party that the Shinde faction was the real political party when the rival faction emerged, and Sri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Sri Sunil Prabhu has any authority to issue any whip on 2nd June 2022. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents are liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. Irrespective of any conclusion that may be reached about which faction was the real political party, respondents could not be held to be disqualified on the ground that they violated the whip dated 2nd July 2022. This is because of the reasons recorded herein below. The petitioner has failed to prove the service of whip dated 2nd July 2022. Petitioner Shri Sunil Prabhu PW1 in his affidavit in lieu of examination in chief deposed that the whips dated 2nd July 2022 were sent by email to the email address of the respondents. He stated that Shri Vijay Doshi, an employee working in the Shiv Sena Vidhimandal Karyalay, Vidhan Bhavan, was instructed to send the whip. He further deposed that two whips dated 2nd July 2022 were sent by Shri Vijay Doshi to the respondents in disqualification petition number 19 and 21 of 2022. We did 3 emails dated 2nd July 2022. The said emails were produced along with the affidavit in lieu of evidence in chief. He further stated that email addresses of the respondents were taken from the email addresses mentioned in the official list of members of Maharashtra Legislative Assembly 2023, or as mentioned in a list furnished by the advocates for the respondents. We did the email dated 21st September 2023. Shri Vijay Joshi, PW2, specifically filed affidavits in lieu of examination of chief and deposed that he was working in the Shiv Sena Vidhimandal Karyalay, Vidhan Bhavan, in June 2022, and on instructions of Shri Sunil Prabhu, sent 2 whips dated 2nd July 2022 on to the MLA of Shiv Sena Legislature Party. We did 3 emails. He produced printouts of email dated 2nd July 2022 along with whip dated 2nd July 2022. However, during the cross-examination of Shri Vijay Joshi, PW2, he deposed that one computer operator printed the whip dated 2nd June 2022, and he along with 2 peons distributed the whip to all the legislators of Shiv Sena. Further, he also deposed during cross-examination that acknowledgements were taken. Thus, the witness who was specifically brought to depose in respect of the service of whip dated 2nd July 2022 made extremely contradictory statements in the affidavit in lieu of examination in chief and during cross-examination. Further, it is to be also noted that the acknowledgement talked about by Sri Vijay Joshi, PW2, were never brought on record. Coupled with the above facts, respondents have demonstrated how some of the email IDs in the printout of the email produced by Sri Vijay Joshi are wrong. In view of the above, I hold that petitioner has not been able to establish the service of whip dated 2nd July 2022, and thus petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. Rule 3, subclause 5 of the members of Maharashtra Legislative Assembly, disqualification on the grounds of defection rule 1986, provides that where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the assembly contrary to the directions
issued by such political party or by any person or authority authorized by it in this behalf, without obtaining in either case the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislative party concerned, or shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date of such voting or abstention, inform the speaker as in form 2 whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, persons or authority. From the record of the legislature secretariat, it is seen that the petitioner and or UBD faction has not complied with this rule. Thus, on this ground also, petitioner's case that the petitioner respondents were liable to be disqualified for violation of whip dated 2nd July 2022 must be rejected. The Honorable Supreme Court in Kyoto Holohan and others at paragraph 123 SCC has held that, keeping in view the consequences of the disqualification, i.e. termination of the membership of a house, it would be appropriate that the directions or whip which results in disqualification under paragraph 21b is so worded as to clearly indicate that voting or abstaining from voting contrary to the said direction would result in incurring the disqualification under paragraph 21b of the 10th schedule, so that the member concerned has foreknowledge of the consequences following from the conduct in voting or abstaining from voting contrary to such a direction. A perusal of the whip dated 2nd June 2022 shows that the whip dated 2nd June 2022 does not contain any words which would indicate that the said whip, if not allowed, would result in the disqualification. Thus, on this count as well, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for violation of the whip dated 2nd June 2022 must be rejected. At this juncture, I intend to look into respondent submission that a whip cannot be issued in an election to the post of speakers has to be considered, even though the learned counsel for the petitioner submitted that in normal course of events no whip is issued for the election of the post of the speaker, but he submitted that the election held on 3rd July 2022 was not in normal course, but it was crucial event linked to the sustenance of the government. Petitioner further submitted that in any election where a candidate has been set up by the political party, then in that case the directions of the political party are binding on the legislator in important elections. At the outset itself, I must state that the record that the petitioner's submission that in a speaker's election candidates are set up by a political party is factually wrong. As a convention, the candidates are not usually seen as candidates set up by political party. In the present case also, Sri Rajan Salvi was not set up as a candidate of Shiv Sena, but his notice of nomination was moved by a legislator affiliated to the NCP and seconded by legislator तो affiliated देखिए, to जिस the फैसले का INC. इंतजार था This वो clearly फैसला indicates आ गया है और एकनाथ शिंदे की सरकार बच गई है। एकनाथ शिंदे का विधायक पद बच गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला सुनाते वक्त अभी भी ये फैसले की सुनवाई चल रही है। करीब 1.5 घंटे से वो अपना फैसला सुना रहे हैं, लेकिन उसका निचोड़ यह है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। विधानसभा की सदस्यता उनकी बरकरार है और अपने फैसले में उन्होंने कई सारी रीजनिंग दी है, कई सारे कानूनी पहलुओं का हवाला दिया है, कई सारे तकनीकी पहलुओं का हवाला दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है और उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी को खारिज कर दिया है। जो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर किया गया था उसको उन्होंने इनवैलिड बताया है और उसके ऊपर जो मोटे मोटे तौर पर जो तमाम बातें कही गई हैं वो ये है कि चुनाव आयोग ने जब अपना फैसला सुनाया था और एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना,
तो ऐसे में जिन तथ्यों के आधार पर उसने फैसला सुनाया, जो संविधान को रिफर किया गया शिवसेना के, उसी आधार पर राहुल नार्वेकर स्पीकर ने भी अपना फैसला सुनाया है और विधानसभा के पटल पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही, एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। और साथ में यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जो भरत गोगावले, जिनको विप अपॉइंट किया गया था, वही असली विप है, जबकि सुरेश प्रभु, जिन्हें की ठाकरे गुट ने विप अपॉइंट किया था, वो विप नहीं रह जाते, क्योंकि असली शिवसेना की मान्यता शिंदे गुट को मिल चुकी है। इसलिए अगर वो कोई विप जारी भी करते हैं और उनके विप जारी किए जाने के बाद अगर शिंदे गुट के लोग उस बैठक में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इस तरह के तमाम तकनीकी ग्राउंड जो है दिए गए, तमाम लीगल ग्राउंड दिए गए, और इसी आधार पर अब स्पीकर नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया है। यहां पर मोटी बात यह है, बड़ी बात यह है कि अजीत पवार के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी हलकों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर अजीत पवार को मौका मिल सकता है। उन्होंने कभी अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को छुपाया नहीं, कई बार वो बोल चुके हैं कि हाँ, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और उन्हें लग रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो उनको मौका मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे अपना कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा कर सकते हैं। अक्टूबर में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। इस फैसले को अगर उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में 3 से 4 महीनों का वक्त लग जाएगा, और तब तक में लगभग ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। तो कुल मिलाकर पलड़ा एकनाथ शिंदे का ही इस पूरे मामले में भारी रहा और उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ है। तो अब इसके आगे जो भी प्रतिक्रिया होगी, महाराष्ट्र की सियासत में जो भी हलचल होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। जय हिंद।